respected panelist experts, the moderator, and the audience. All those who have joined with us in online mode and all those who are attending the summit in Indore. I welcome you all on behalf of ATAXIA Awareness Society to this first of its kind event of National ATAXIA Summit. It gives us immense pleasure and honor to have renowned experts of international fame from top-level medical institutes with us today to enlighten us with valuable insight about the topic ataxia today. We are feeling blessed to have here Dr. Achal Srivastava, a senior neurologist and medical researcher who heads clinical neurophysiology facility and ataxia clinic at AIIMS, New Delhi. Without further ado, I would like to introduce moderator of today's panel discussion, Dr. Anupam Gupta. Dr. Anupam Gupta is a neonatologist from Manchester, UK. He did his MBBS and MD Pediatrics from Mumbai and got trained in neonatology from Newcastle, UK, and is also a fellow of Royal College of Pediatrics and Child Health. He also has interest in research with PhD from Durham University. He is passionate about patient-focused human care, and that's why has kindly agreed to moderate the session for us today. We are grateful, Dr. Gupta, to have you here as the moderator of this panel discussion. And now I request you, Dr. Gupta, to introduce the panelists and carry forward the session. Thank you. Sorry, I said, are these homegrown trials? Because the question then comes that what is the local participation, and do you think the patients in India, they have been able to participate in these trials? They will be able to participate surely, because there is an organization, and also people who are working on ataxias have got big patient database, and they are always eager to participate. There is no hitch in participating. And do you think there has been any hindrance in terms of patient participation, in terms of the distance, India being a big country? Absolutely not. Specifically in presence of such an organization, there is no issue of collecting the patients. In general also, the clinicians who are working on ataxia, they have got a very good and big database of ataxia patients, and they are always eager to participate. Thank you so much. We'll come back to you on yes. the all panelist discussion. Thank you once again. The next panelist is Dr. Farukh. He is a principal scientist at Institute of Genomics and Integrative Biology, which is under Council of Scientific and Industrial Research. Dr. Farukh did his MBBS from Kerala University and PhD from Neurology in AIIMS. He has worked mainly in the area of clinical genetics and genomics of hereditary ataxia. His lab runs a pan-India program, and they're focusing on the disorder of the rare diseases. He's also an associate genetic counselor. So, Dr. Farukh, thank you so much once again for joining. Can you hear us? Can I? The first question would be. Can you hear me? From what I can see, you're very heavy in terms of diagnostics, especially the DNA-based diagnosis. So I'm going to be a bit controversial here, and I'm going to ask, many people wonder this question, is that when in absence of any effective treatment, why should anybody bother for expensive DNA molecular tests? So I definitely understand the challenges which are there. Even we have the diagnosis or we do not have the diagnosis, but overall I
philosophy in mind whenever I see patients or when it is a time to counsel the patient. So it's just looking forward, and the knowledge is ever, and the new therapies are coming, tailored medicines are on their way. So unless we get to know, we get to understand the genetic spectrum of our patients, it will be a heterogeneous pool of Sorry, Dr. ataxias, right? Can you, the line is not very clear. Can you speak a bit slowly for us? The line is not clear at all. A bit slower, please. I will just try to. Am I audible now clearly? This is better. Yeah. So there is some network issue. There's heavy raining here, but don't worry. I will try to mention my point. I am just trying to say that it is really challenging even to have received the diagnosis of ataxia genetically, or maybe someone doesn't to go. The difficulty of the disease always resides with definitely the patient, and the family has to bear all the trouble of the disease and its problems. But as a like a medical personnel, and when it's a matter of counseling patients, so definitely the philosophy which works to my mind and something to give as a positive something to the patient and the family is just to look forward actually. So the things are on their way, like the tailored therapies are coming in, ASOs and different like the disease specific therapies are on their way. So unless we establish the genetic sorry, Dr. Farukh, I think we are still struggling. Should I come back to you later? You know, because we are still struggling to understand you. Dr. Farukh? Dr. Farukh, should we start again? फिर से बात करें? Hello, I think we lost Dr. Farukh. Okay, while we are waiting for him to come back, should we move on to Dr. Pal, Dr. Pramod Pal? Thank you once again, Dr. Pal, to join us. Dr. Pal is a professor of neurology and movement disorder and a program director of movement disorder fellowship at NIMHANS, Bangalore. He did his MD from Chandigarh and DM from NIMHANS with fellowship from Vancouver and Toronto. He has got about 390 plus publications, and he has held various posts at national and international levels. So welcome and thank you once again for joining us. Thank you. Yeah. So Dr. Pal, can I ask? Yeah. Your expertise in spinocerebellar ataxia. Yes. Are there any specific problems in SCA which are different to Friedreich's ataxia? And how do we manage them? And which problems are manageable? Okay. So I've just been back that there are problems of some. I would be using the bilingual style. So, and if you can repeat your answers in Hindi as well, that would be great. So, जो spinocerebellar ataxia है उसमें उससे specific क्या problems हैं और उनके manage करने के लिए क्या हैं और कौन problems manage की जा सकती हैं और finally इसके लिए क्या research चल रही है NIMHANS में. Thank you.
Thank you, Dr. Gupta, and thank you, the society, for giving me the opportunity. I'll be speaking mainly in English, but I will tell something in Hindi, but my Hindi may not be grammatically correct. So, this spinocerebellar ataxia, the term medically what we use is are those ataxias which are autosomal dominant. That means parents se inherit hota hai. Okay, so these are unlike the Friedreich's ataxia, where the gene is inherited, one from the mother, one from the father, but both of them are not clinically affected. So it is autosomal recessive condition, Friedreich's ataxia, and it starts very early in life. And the Friedreich's ataxia course is much more aggressive than the SCA, what is known as spinocerebellar ataxia, which are inherited in an autosomal dominant fashion. That means a spinocerebellar ataxia mein, SCA mein, either the mother or the father definitely has a disease, though probably the disease severity may not be the same as the particular person which we are concerned. So SCA or spinocerebellar ataxia में ये जो बीमारी शुरू होता है usually at the age of 20 to 30 इसी age में शुरू होता है. But in Friedreich's ataxia it starts in the first decade, within the first 10 years. So in general, SCA or spinocerebellar ataxia prognosis is much better, and the course is also much favorable compared to the Friedreich's ataxia. But as the generation goes, first generation, second generation, third generation, ये spinocerebellar ataxia में क्या होता है? इसको कहते हैं CAG repeat disorders or repeat trinucleotide repeat disorders. So father का अगर age, it had started at the age of 50 years, the son may get at the age of 30 years, and his son, if he's affected, may get the disease at the age of say 15 years. ये इसको कहते हैं anticipation. जो जब generation बढ़ता है, अगर वो gene inherit, abnormal gene for the father or the mother inherit होता है, तो वो ज़्यादा repeat हो जाता है. मतलब repeat मतलब suppose a commonest SCA और spinocerebellar ataxia इंडिया में जो मिलता है SCA 1, 2 and 3, और certain ethnic communities में SCA 12 मिलता है. Compared to the other countries, there are SCAs about 40 to 50 SCAs are defined now, but we get mainly SCA 1, 2, 3. So a characteristic easily we can differentiate from the Friedreich's ataxia. जो spinocerebellar ataxia में होता है, gait का balance का problem होता है और बोलने का problem होता है, जो Friedreich's में भी होता है. But कुछ ataxia में like spinocerebellar ataxia type 2 जो बहुत frequent है, उसमें eye movement का abnormality होता है. वो देखने में अगर patient, हम लोग normal person को कुछ side से लेफ्ट की राइट साइड से बुलाता है तो हम लोग आंखों घुमा के देख सकते हैं. ये spinocerebellar ataxia मेनली टाइप 2 में आंखों घुमा के देखने में प्रॉब्लम होते हैं. इसको कहते हैं जो स्लो सैकाइड्स है. सो आई मूवमेंट एब्नॉर्मलिटी इज वन ऑफ द क्लासिकल प्रॉब्लम्स अपार्ट फ्रॉम ataxia, and also they develop at neuropathy in the legs. Similarly, SCA3 जो spinocerebellar टाइप 3 जो डिसेंट एक्चुअली जो ऑरिजिन होता है प्रॉब्ली पोर्टुगीज उधर से आया था इंडिया में, उसके में डिस्टोनिया करके ट्विस्टिंग ऑफ द हैंड्स लेग्स इस ज्यादा होता है अपार्ट फ्रॉम द ataxia. So and these are very common things in this 1, 2, 3. And another one, spinocerebellar type 12, only 4 ataxias I am going to tell. The spinocerebellar type 12 SCA 12 ये certain ethnic communities में होता है. इसमें ज्यादा हैंड शेकिंग ऐसे होता है, बाद में चलने का प्रॉब्लम, बोलने का प्रॉब्लम होता है. और इसके एज ऑफ ऑनसेट जो शुरू होता है अराउंड द 40s में शुरू होता है, बट जनरेशन के बाद अर्ली हो सकता है. तो इन जनरल मैनेजमेंट के लिए ये 3-4 ataxia है, इसमें हम लोग सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं. अगर बहुत शेकिंग होता है तो उसको क्लोनाजिपाम, प्रोप्रानोल, ऑल दिस टैबलेट्स हम देते हैं, जिसमें शेकिंग टेम्पोरली बंद होता है, थोड़ा सा कम होता है. Most important thing, we advise the patient. There is no specific treatment for any of these ataxias. There is no curative treatment as of now. Nothing like stem cells, etc. First day से हम लोग जो advise करते हैं इन ataxia को, एक balance, gait and balance first assess करके उसको exercise करना है. तो exercise जो balance के लिए होता है, different type of stepping exercise, ball के ऊपर exercise. So what I classically tell the patients is that suppose we are born with say 100 nerve cells in the cerebellum. The cerebellum is the main problem. अगर 50 भी चला गया because of this problem of the genetics, जो बाकी 50 है उसमें हम लोग एक्सरसाइज करके उसको स्टिमुलेट करके इंप्रूव कर सकते हैं, उसका फंक्शन इंप्रूव कर सकते हैं. जो डॉर्मेंट सेल्स है
उसको function improve कर सकता है. So definitely exercise, balance and gait exercise will help to, either stabilize in the initial stages, or it can reduce the progression of this disease, which is very slowly progressive. Second thing is that we also advise the patient to have speech therapy, and बाद में in the later stages swallowing problem होता है, उसके लिए swallowing problem assess करने होता है. And the most important thing is that you should try to reduce the weight if you are overweight, because full upper part of the body legs के ऊपर पड़ते हैं, so leg जितना हो सकता है weight कम करना है. So there are the 4 or 5 basic things we tell. Some ataxias can have, Parkinsonism, like half shaking होता है, एकदम like ACA2, जो spinal stavasa type 2, उसमें जैसे लगता है Parkinson disease है. So कभी-कभी इसमें जो Parkinson disease के लिए दवाई देता है, like amantadine और levodopa, carbidopa, ये थोड़ा सा help कर सकता है. जो ACA3 में dystonia होता है, उसमें भी थोड़ा बोटॉक्स इंजेक्शन दे, बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन देके, नहीं तो मेडिसिन जो डिस्टोनिया के लिए होता है उस देके थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं. सो डेफिनेटली देयर इज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट विद different types of medicine according to the type of symptoms the patient has, apart from the ataxia. And कुछ ataxias, SCAs, spinal cord ataxia में आंखों में प्रॉब्लम होता है, देखने में प्रॉब्लम होता है, नाइट में प्रॉब्लम होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ऑप्टिक एट्रोफी होता है, किसी ataxia में cognition मतलब dementia type का होता है, though dementia is not very common in SCA, spinal cord ataxia. So this is the in nutshell what we practice. In NIMHANS, again we do a very good physiotherapy, balance and gait exercise करते हैं. इसमें I'll just tell you one more thing, that I had an experience of treating all this, not treating, taking care of these patients with Ayurvedic treatment, because there is no specific treatment for this, and we had done a control study with our Ayurveda colleagues, because we do not have oral medicines. They have given physiotherapy, massage therapy. There could be some improvement, because these are all a pathway through the exercise which increases the brain factors, brain derived neurotrophic factors, etc. So इसमें थोड़ा सा improvement हो सकता है. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Pal. ये काफी आपका डिटेल आंसर था, और ऑब्वियसली इसके बारे में और चर्चा करेंगे जब हम पैनल डिस्कशन कर रहे होंगे, बट दैट वाज अ वेरी वंडरफुल आंसर. थैंक यू. So moving on to Dr. Muthyala, can you hear us? Yes, please. I can hear you. So thank you once again, sir, for joining. Dr. Muthyala is a president and chief executive of Indian Organization of Rare Diseases. This is a non-profit umbrella organization representing about 7,000 rare disease patients and their families. He is also a member of rare diseases of various international organizations at Asia Pacific, Europe, and US level as well. But this is all is in his voluntary capacity, where he is by vocation he is a professor in the Department of Experimental Clinical Pharmacology in University of Minnesota, USA. His current research interests are developing therapeutics of rare diseases, which includes ataxia. So welcome once again, Dr. Muthyala. Can I ask what is the national policy on rare diseases, and where does the ataxia stand in that? And we are talking about the Indian context. Thank you for the opportunity to talk about it. I think in terms of talking about the national policy, I refer to Dr. Verma, who is the author of the policy written in 2017. So I defer that question to Dr. Sharma to answer that. As far as the policy is concerned, I think there is still a lot more to be done. At this time, I think I leave it that way. Let Dr. Vermaji answer that question, please. So what you're saying is that ataxia is not included in the rare diseases. Is that correct to say? Yes, that is correct. And what steps have been taken to do that? Can we ask? Yes, you can. As I said earlier, when the Mahapita Vermaji is here for that thing.
So again, I refer to that question to him, why it was not included. And this question was asked to me as a representative of all rare diseases. People ask me, why not my disease not included in it? What should I answer to them? There are 7,000 of them. Which one is preferred? Which one is not preferred? Who is supposed to ask that question? I leave these questions rather than answers to you. So also, just for our knowledge, what are the benefits of any disease getting included in the rare diseases charter? I'm So, sorry. So once a disease has been included in rare diseases, what is the benefit patients tend to get? I suppose that, whether the ataxia or any other disease is included in it, the benefit is either financial or social or any other advantage, benefits that should get. Our vision, in one word, we want all rare disease patients should have equal opportunities, just like any person with a common disease. That is our goal. That is our mission. Also, finally, can you tell us about the Orphan Drug Act, and does it exist in India? Unfortunately, it does not exist at this time. We have made several requests to the government of India, but there is I must make it clear that the Orphan Drug Act in the US is not applicable in India. Here is the reason. Orphan Drug Act is only for the new drugs, not for the drugs which are being manufactured in India. At this time, how many new drugs are discovered in India? I'm not sure. So unless the new drugs are involved, we cannot have the Orphan Drug Act similar to the United States. However, being the generic drug companies, we should have our own Orphan Drug Act just specific to India. That's what we have made a request to the Ministry of Health to have a separate office for the Orphan Drug, Orphan Product Development Office in under CDSCO or Ministry of Health. As I am told that is being considered at this time. I don't know when it is going to happen, but we are making all efforts to make that happen, because without a office, it's very difficult to recognition of the rare diseases. If you ask any questions to the Ministry of Health, they don't know who is going to answer that question. At least if there is a place where one can put the question directly to that person, that is a very, very possibility that you can get the answer. Whether right or wrong, that's a different story. But we must have an office for orphan product development under CDSCO or Ministry of Health or Niti Aayog, whoever that is. We have made this request, and fortunately, we had a discussions with the Ministry Secretary in the Ministry of Health, and they said that they are going to consider, but I'm not sure where it is at this time. We are still fighting for it. Thank you, Dr. Muthyala. Thank you. So, Dr. Farukh, are you back? Can we come back to you? Yes. Yeah. Can you hear me now clearly? Yeah, this is much better. No, sorry. Actually, the previous, I was in a bad connectivity area and it is heavily raining here. So, is the reason for the connection. So, you may ask your question. Sorry. Yeah. So, basically, हम लोग पूछ रहे थे कि डीएनए डायग्नोसिस जो अटैक्सिया पेशेंट्स का है, वो उसका क्या रोल है in terms of management and disease progression, and मतलब उसका ओवरऑल पेशेंट मैनेजमेंट में कहाँ फिट बैठता है वो? नहीं, मैं समझता हूँ कि अक्सर जब मैं भी मेरे पीएचडी टाइम में जब पेशेंट से बात करता था, तो पहला सवाल यही होता था कि अगर हमारा ये जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन से अगर डायग्नोसिस का पता चल भी जाता है तो उनको क्या एडवांटेज मिलने वाला है, या उनको अगर वो नहीं कराए तो उनको क्या डिसएडवांटेज होने वाला है. तो ओवरऑल जेनेटिक टेस्टिंग का जो महत्व है वो काफी ज्यादा है. पहली बात कि हमें आज हमारा जो विज्ञान है, मेडिकल साइंस का या किसी भी
क्षेत्र का, तो ये सब प्रॉपर रिसर्च और साइंस के माध्यम से हुआ है। साइंटिस्टों की मेहनत, डॉक्टर्स के ये मुकाम अभी तक हासिल किया है। तो मुझे लगता है कि ये भी जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल सिर्फ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह नहीं, एक साइंस की तरह लेना चाहिए। और जहां तक मैं समझता हूँ कि आज की डेट में कि इनके जेनेटिक डीएनए बीमारियों का इलाज ऑलमोस्ट मोर देन 90% बीमारियों का इलाज नहीं है, एक्सेप्ट जहाँ पे एंजाइम रिप्लेसमेंट या कई अभी नई थेरेपीज आ रही है। ये इसी वजह से आ रही है कि उनकी जेनेटिक डायग्नोसिस के बारे में हमें पता है। अगर एक बार सोच के देखिए कि जितने अटैक्सियाज है, अगर इनका जेनेटिक डायग्नोसिस नहीं होता है तो हमारे लिए क्या होगा? ये सब एक अटैक्सिया के मरीज होंगे विदाउट कोई डिवीजन कि ये इस प्रकार का अटैक्सिया है, ये उस प्रकार का है, या एक बार शुरू होने के पश्चात ये क्या सब सेम ही स्पीड से प्रोग्रेस करेंगे या इनका अलग अलग प्रोग्रेशन हो सकता है, अलग अलग सिवियरिटी हो सकता है। बहुत सारे और भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी होता है। और एज वी से कि मैनेजमेंट में पहला पार्ट डायग्नोसिस होता है, तो डेफिनेटली जेनेटिक डायग्नोसिस का और इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं समझता हूँ कि शायद मैंने आपका सवाल का जवाब दिया है। थैंक यू डॉक्टर फरूक। ऐसे कोई जब डीएनए टेस्टिंग करते हैं तो इसमें ऐसा इंटरप्रिटेशन हो सकता है जिससे पता चले कि उससे प्रेडिक्ट किया जा सके कि प्रोग्रेशन जो डिसीज का है, बिकॉज ये जो अटैक्सिया डिसीज होती है सब में प्रोग्रेस होती है, तो इससे प्रोग्रेशन प्रेडिक्ट किया सकता है क्या? कैन वी प्रेडिक्ट द प्रोग्रेशन ऑफ अटैक्सिया बाय टेस्टिंग और डीएनए टेस्टिंग? डीएनए टेस्टिंग हमें ये हेल्प करने में मदद करता है कि ये कौन सा प्रकार का जेनेटिक डिफेक्ट है, और उस पर्टिकुलर जेनेटिक डिफेक्ट की नेचुरल हिस्ट्री का डेटा देखते हुए और समझते हुए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जनरली उसका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब नेक्स्ट जो कोर्स होगा डिजीज का वो किस प्रकार का होगा। तो इस तरह से नेचुरल हिस्ट्री के डेटा सेट से डेफिनेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बायोलॉजी कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूला की तरह नहीं काम करता है, काम करता भी है, लेकिन है कि वो साइंस को और समझने की जरूरत है। तो लगातार रिसर्च और ये साइंस और विज्ञान के माध्यम से शायद हमें और उसमें मतलब चीजों को पहचानने और समझने में मदद मिल सकती है अगर हम ये इन्वेस्टिगेशन करें। सिर्फ डायग्नोस्टिक्स ही नहीं, मैं कहता हूँ उसके बियॉन्ड हमें रिसर्च की भी आवश्यकता है, और हमें बहुत डीप रिसर्च की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पे इंडिया में हमारी पॉपुलेशन का साइज देखिए और उसके हिसाब से आप रेयर डिजीज, किसी भी डिजीज का प्रिवेलेंस का डेटा देखिए 1 in 50,000। नाउ आप इसी लाइक पॉइंट को अगर आप हमारे पॉपुलेशन के डिनोमिनेटर से कैलकुलेट कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितने होंगे, तो हमारे पास बहुत ज्यादा बर्डन है और हमें उनको टैप करने की जरूरत है। रिसर्च का रिसोर्स हमारे पास है, तो हमें लगता है कि हम वर्ल्ड ओवर वी कैन लीड इन दिस एरिया, पर्टिकुलरली जहाँ जेनेटिक रिसर्च की बात आती है। थैंक यू डॉक्टर फारूक। मुझे थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अभी मुझे बताया गया कि डॉक्टर श्रीवास्तव जो है वो मीटिंग 6 बजे के बाद नहीं अटेंड कर पाएंगे, तो जो थोड़े से कपल ऑफ क्वेश्चंस थे मैं उनसे वापस करूंगा, एंड देन आई विल कम बैक टू यू। सॉरी फॉर दैट। तो डॉक्टर श्रीवास्तव, जी जी बिल्कुल। जो मेन अभी पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट क्या है। तो एटेक्सिया के एरिया में काफी सारी चीजें आती हैं, काफी लोग हियर से भी है, ट्रायल भी है, जैसा एक हमारे पैनलिस्ट डेलीगेट ने पूछा है कि आयुर्वेदिक का भी है। तो आपके एक्सपीरियंस में व्हाट इज द एविडेंस बेस्ड जो है, जो कि ताकि पेशेंट जो है बार बार घूमना बंद कर दें और साइंस की सुने, तो आप इस बारे में क्या शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज? सॉरी, आप म्यूट पे हैं। आप हेलो, यू आर स्टिल या थैंक यू। कैन यू प्लीज रीस्टार्ट? या हाँ, नहीं वो आप लोगों की तरफ से म्यूट होता है, इधर से हम लोग नहीं कर रहे। अच्छा, तो इस समय अभी जो सबसे अच्छा एविडेंस है, डॉक्टर पाल सर ने भी आप लोगों को बताया था, सबसे अच्छा एविडेंस जो है वो है फिजियोथेरेपी का। तो इसके अलावा दवाओं की अगर हम बात करें तो कोई दवा ऐसी नहीं है जो आप सोचिए कि इम्बैलेंस को ठीक कर पाए, या
कुछ दवाएं होती है ट्रेमर कुछ कम कर देंगी, लेकिन इम्बैलेंस वापस नॉर्मल ला देगी ऐसी दवाएं फिलहाल मौजूद नहीं है। दो अन्य चीजें हैं, एक रिलुजॉल की बात है और दूसरी बात यह है कि स्टेम सेल्स की। तो अभी स्टेम सेल्स का एक उन्होंने पेपर पब्लिश किया था, और हमारा ट्रायल नहीं है, ट्रायल दूसरे लोगों का, उसको उन्होंने कंपाइल करके पब्लिश किया था। तो अभी ऐसा नहीं है कि स्टेम सेल देने से लोग ठीक होने लगेंगे, इतना एविडेंस नहीं है। दूसरी चीज ये है, रिलिजॉल की जहां तक बात है, उसका ट्रायल वो इस तरह का ट्रायल था कि बड़ा ही मिक्स टाइप के ग्रुप में किया गया था, तो वो भी कोई इतना बड़ा एविडेंस नहीं देता कि हम लोग लोगों को देना शुरू कर दें और लोग ठीक होने लगेंगे। तो अभी अगर आप कहें कि कोई बहुत अच्छा एविडेंस मौजूद है किन्हीं दवाओं के लिए, तो अभी ऐसा नहीं है। और जरूर हम लोग भी लुकआउट पे रहते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज हो जिससे कि अटेक्सिया के इतने सारे मरीज, चूंकि अब बहुत सारे देख चुके हैं, और फारूक काफी समय तक मेरे साथ ही काम किए थे, उन्होंने भी मरीजों के दुख को समझा है उस समय। तो ये बात वही है कि अभी फिलहाल बहुत मरीजों को सहायता पहुंचा सकने की स्थिति में हम लोग है नहीं। कुछ सिम्टम्स पे जरूर एक्शन होता है, कुछ फायदा हो जाता है शुरुआत के दौर में, जैसा कि डॉक्टर प्रमोद पाल सर ने बताया था कि कुछ सिम्टम्स पे हम लोग एक्ट कर सकते हैं कुछ तरह से, कुछ दवाओं की सहायता से, किसी किसी में बोtulinum टॉक्सिन की सहायता से, पर ये कि रिवर्स हो जाएगा डिजीज, ऐसा नहीं है। थैंक यू। तो आपके लिए जो हमारे डेलीगेट्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा इन टर्म्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड रिसर्च? बिल्कुल, क्योंकि इस पे रिसर्च ऑलरेडी जारी है। सबसे बड़ी बात कि कहीं पे एनरोल रहना आवश्यक है, जिससे पता रहता है कि हाँ ये लोग मरीज हैं और ये मौजूद हैं। कल किसी ट्रायल की शुरुआत होती है तो हम लोग इमीडिएटली बुला लेंगे। अब जितने लोग संपर्क में हैं उनको हम लोग जरूर बुलाएंगे जैसे ही हमें किसी ट्रायल के लिए शुरुआत करनी होगी। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं एनरोल्ड रहें। और दूसरी बात, इस तरह से जैसे आप मीटिंग अभी आज कर रहे हैं, इस तरह से होती रहती है तो लोग जो अभी अपडेटेड क्या स्थिति है वो सबको जानकारी होती रहती है, और सभी लोग उस प्रकार से तैयार रहेंगे कि आज जरूरत पड़ गई है, अब हम ट्रायल में एनरोल हो सकते हैं। थैंक यू। फाइनली आपने बताया कि आपके पास एक डेटाबेस है, तो उसमें जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कितने पेशेंट्स हैं जो आपके डेटाबेस में है, और उसमें क्या ब्रेकअप है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स का? करीब करीब 5000 मरीज हैं। मेरा और डॉक्टर फारूक का डेटाबेस कॉमन ही है। अभी वो डिटेल में आपको बता देंगे क्योंकि मैं 6 बजने वाला है, मैं निकलूंगा अभी। करीब करीब 6000 पेशेंट हैं उसमें, और मैं समझता हूँ अराउंड 2000 के आसपास है जो एक्चुअली आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। टाइप 12 और टाइप 2 जो है वो सबसे कॉमन है, और उसके अलावा फिर टाइप 1 और फिर टाइप 3, टाइप 7 भी कुछ मरीज मिले हम लोगों को। तो इस तरह से बाकी कुछ कुछ एक एक दो मरीज टाइप 28 दिस दैट, ये सब जो कि बहुत रेयर एंटिटीज हैं वो सभी मिले हैं। और फ्रेडरिक्स ऑफ कोर्स करीब मेरे ख्याल से 300 मरीज होंगे फ्रेडरिक्स के। और इनका इन पेशेंट्स के डायग्नोसिस और डिस्ट्रीब्यूशन से कोई पैटर्न इमर्ज करता है क्या? पैटर्न किसी एक प्रकार का पैटर्न है कि क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स पे काम हो रहा है, एक खास पैटर्न ये है कि उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो टाइप 2 और टाइप 12 बहुत ज्यादा मरीज है। दक्षिण भारत की बात करें, डॉक्टर प्रमोद पाल सर की तरफ की बात करें, उधर टाइप 1 ज्यादा मिलता है, टाइप 2 टाइप 3 भी काफी मिलता है। इधर टाइप 3 उतना कॉमन नहीं है, टाइप 2 एंड टाइप 12 बहुत कॉमन है इधर। और इसी तरह का पैटर्न जो है, अब ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो उधर भी टाइप 2 और टाइप 12 ज्यादा कॉमन है। तो थोड़ा सा वेरिएशन है भारत के अगर हम बात करें तो अलग अलग एरियाज में। थैंक यू। आई थिंक इट्स 1:06. So thank you for your participation. Thank you. I think we'll get back to you. Yeah, yes, thank you everyone. मैं फिर जस्ट पार्टिसिपेट करूंगा अगर पहले खत्म हो गई अपनी मीटिंग। Thank you. Thank you once again. Dr. Farukh. So next question आपसे ये है कि चूंकि आपका एक्सपर्टीज इसमें है, डीएनए और जेनेटिक स्टडीज में है, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्रिस्पर थ्योरी का क्या रोल है? आप थोड़ा सा एक लेमन की लैंग्वेज में ये हमारे ऑडियंस को एक्सप्लेन करेंगे? आप सॉरी, यू हैव टू अनम्यूट। या आपने अनम्यूट कर दिया जी, शुक्रिया। तो जो आपने क्रिस्पर के बारे में बात किया है, तो अभी तक इस क्षेत्र में अभी तक जो भी काम हुआ है
इसमें हम इस प्रकार से करते हैं कि जो जेनेटिक डिफेक्ट होता है, जो जेनेटिक विकार होता है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली भी पॉसिबल होता है। हम डिशेज में जो सेल्स होती है उसको डेफिनेटली हम मॉडिफाई कर पाते हैं। हमने खुद फ्रीड्रिक अटैक्सिया का जो जीन डिफेक्ट है, हमने पेशेंट के ब्लड सेल लेके उसको आईपीएससी में कन्वर्ट किया है, और उन आईपीएससी में हमने देखा है कि वो जो जेनेटिक डिफेक्ट होता है जीए रिपीट्स का, तो उसको हमने क्रिस्पर के माध्यम से उसको कट किया गया है। तो कट करके उसको हम चाहे तो नॉर्मल जीए रिपीट से भी जो उसका जो म्यूटेशन होता है, तो फ्रीड्रिक अटैक्सिया में क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड होते हैं बेसिस G AA के, तो वो जो रिपीट, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड, ये बहुत बार रिपीटेड होते हैं, कम से कम 1000 बार इन मरीजों में, और नॉर्मली वो 10 से 20 के बीच में होते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि वो जो जीए का जो स्ट्रेच होता है हमारे डीएनए के अंदर, उनको दोनों साइड से कट करके हम उसको एक नॉर्मल जो लेंथ होता है, जो नॉर्मल 10 या 20 रिपीट होता है, उससे रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिशेज में पॉसिबल होता है। साइंस के लिए, रिसर्च के लिए ये काफी कारगर है। हमें बहुत मदद मिलती है इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से, चीजों को समझने में, बीमारी की वजह जानने में, बीमारी किस तरह से न्यूरॉन्स को डैमेज करती है उसको पता करने में। लेकिन अभी थेरेप्यूटिक उसका जो पर्सपेक्टिव है वो शायद अभी और रिसर्च चल रहा है। तो यही ये फ्यूचर थेरेपीज है, किसी न किसी माध्यम से ये एक तरह से कह सकते हो कि डीएनए सर्जरीज है, और आई थिंक इनका पोटेंशियल है फ्यूचर में काफी। तो जैसे जैसे और हमारे पास टूल्स अवेलेबल होंगे, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये जीन लेवल पे ही हम इन विकारों को टैकल कर पाए, अन्यथा और भी तरह की जो चीजें हैं उनका रोल रहेगा नए दवाइयाँ डेवलप करने के लिए। Thank you. Next is what is the utility of knowing the diagnosis in carrier stage? So कुछ पेशेंट जो होते हैं जो कैरियर भी होते हैं, तो उनका क्या फायदा है अगर ये डायग्नोसिस किया जाए उनका? तो इसमें दो प्रकार का क्वेश्चन है। जब आप कैरियर स्क्रीनिंग की बात कर रहे होते हैं, तो ये जनरल आमतौर पे हम जो रेसेसिव अनुवांशिक बीमारियां होती है, मतलब दो प्रकार की होती है, डोमिनेंट और रेसेसिव। तो रेसेसिव विकार में जो जीन की दोनों कॉपी होती है वो दोनों खराब होती है, और कैरियर वो लोग होते हैं जिसमें एक कॉपी खराब रहती है, उनमें बीमारी लाइफ टाइम में नहीं होता है अक्सर। डोमिनेंट बीमारियों में आपका 2 कॉपी में से एक भी कॉपी अगर डिफेक्टिव होता है, तो वो काफी है कि बीमारी अकेले, वो एक ही कॉपी का डिफेक्ट बीमारी पैदा कर सकता है लाइफ टाइम में। तो जब हम बात कर रहे होते हैं डोमिनेंट डिजीज के कैरियर्स की, तो शायद हम बात कर रहे हैं कि बीमारी क्योंकि उनमें एक उम्र के बाद पैदा होती है, तो उस उम्र जब बीमारी पैदा होने का अंदेशा है, उससे पहले अगर हम टेस्टिंग करते हैं, तो उनको उससे क्या फायदा हो सकता है? डेफिनेटली ये फायदा तो नहीं है कि उनके बीमारी जो जब होगी, जिस एज में जब प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एज एट ऑनसेट की बात करते हैं, तो उसको हम कुछ डिले कर दे या वो नहीं हो, ऐसा अभी हमारे पास कोई उपाय नहीं है। डेफिनेटली ये हेल्प जरूर करता है कई बार प्लानिंग करने में, लाइफ के गोल्स सेट करने में, फैमिली प्लानिंग में हेल्प करता है। आजकल प्रीनेटल टेस्टिंग और इन सब का भी आजकल काफी मेडिकल में क्षेत्र ये आगे बढ़ चुका है। तो आई थिंक इन सब चीजों में जरूर हेल्प करेगा ये जेनेटिक डायग्नोसिस, अगर हम उनको कैरियर के स्टेज पे ही हम पता कर लेते हो। और जो पेशेंट भी है, अगर उनके भी अगर कोई प्रेगनेंसी या उस तरह के इश्यूज है, तो उनको भी हम ये जेनेटिकली लाइक ये प्रीनेटल डायग्नोसिस के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। Thank you. So after all of this grilling, I think we can open the floor to general discussion. Basically, we would be going through the different stages. So basically, symptoms, possible treatments, and finally living with ataxia or rehabilitation. And then all the panelists can chip in, depending upon your experience, and we would obviously like to benefit from your expertise and experience. तो मैं अभी ये जो क्वेश्चंस हैं सारे पैनलिस्ट के लिए बोल रहा हूँ। तो पहला टॉपिक जो होगा वो सिम्टम्स रिलीफ होगा। तो आप लोगों का उस बारे में क्या एक्सपीरियंस है? मतलब
काफी अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स को। उसमें डोमिनेंट सिम्टम किसी कुछ को होता है ट्रेमर्स। तो कौन से स्ट्रेटेजीज ट्रेमर्स को डील करने में इफेक्टिव आपने पाए हैं? Dr. Gupta, may I interrupt here? Dr. I.C. Verma is wanting to speak something about it. He is writing in chat. So can you allow him to speak? Yeah, sure. So question is the tremors. So basically we are talking about the symptom resolution. मतलब symptoms के जो problems होते हैं, वो क्योंकि ataxia में there is no cure, तो इसमें symptom based treatment होता है। तो we have had different questions from delegates as well as the family members. कि what is the best evidence based or the experience based modalities for different symptoms. तो पहला symptom जो मैं बात कर रहा हूँ वो tremors का है। कंपकपी जो होती है पेशेंट्स को, सबसे अच्छा उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या है? Anybody can answer this. Okay. Dr. Pal. गुप्ता साहब, मैं एक बात करना चाहता हूँ। नंबर 1 इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस डीएनए बहुत जरूरी है, क्योंकि द फर्स्ट स्टेप टू एनीथिंग, वेदर यू आर फिट फॉर अ ट्रायल, व्हाट ट्रीटमेंट इज सुटेबल फॉर यू, बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट, बेस्ड ऑन डायग्नोसिस। ये जो इतने टाइप के हैं, हर का ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, सबका ट्रीटमेंट एक नहीं होगा। सिम्टम तो एक ही है, लेकिन अटैक्सिया, लेकिन इसके कारण से ट्रीटमेंट जो है इज डिपेंड ऑन द कॉज, एंड द कॉज इज डिफरेंट फॉर ईच ऑफ देम। सो यू हैव टू नो व्हाट इज द कॉज। जो SCA12 है, इंडिया में सबसे पहला पेशेंट मैंने डायग्नोज किया था। ये एक फैमिली थी शिमला में, जिनमें 25-30 लोगों को बीमारी थी। वो डॉक्टर मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब, हमारी फैमिली में ये इतने लोगों को है प्रॉब्लम, लेकिन आप हमारी मदद कीजिए। तब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में था, तो तब उसका SCA12 आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ था। तो हमने सारे ब्लड कलेक्ट किए और फिर डायग्नोज, जब ये इलाज निकला, ट्रीटमेंट निकला, आई मीन कॉज पता लगा, डॉक्टर होम्स जॉन्स हॉपकिंस में थे, तब फिर इनको डायग्नोज किया। तो ये SCA12 जो अग्रवाल फैमिलीज हैं, इसमें मोस्टली SCA12 भी होता है जब हम टेस्ट करते हैं, लेकिन टेस्ट करना चाहिए। नंबर 1 पे पता लग जाता है। जो ट्रिपलेट रिपीट हैं, कितने रिपीट हैं, वो आपको आइडिया देता है कि आपकी बीमारी कितनी सीवियर होगी, कम होगी, कितनी उम्र में होगी, कुछ आइडिया मिलता है। नंबर 3, इट हेल्प्स इन प्लानिंग ऑफ योर फैमिली। देयर आर मेनी पीपल हु वांट कि भाई हमको तो बीमारी हो गई, लेकिन आगे ना जाए, आगे हमारे बच्चों को ना हो। तो और जो बच्चे हो गए, उनको वो पता करना चाहते हैं, भाई मेरे बच्चों को तो नहीं है, क्योंकि बीमारी तो बाद में आती है 30-40 साल पे, लेकिन वो उनकी शादी हो गई 20 साल में, तो 25 साल में वो सोचता है यार पता नहीं मेरे में खराब जीन है या अच्छा जीन है। तो कई लोग चाहते हैं कि भाई मुझे अपना नहीं पता करना, लेकिन मेरा जो बच्चा है, मेरी वाइफ के पेट में, उसका टेस्ट कर दो कि उसमें बीमारी ना हो। तो ये बहुत जरूरी है। द ट्रायल का प्रॉब्लम है, इंडिया में रियली कोई ट्रायल नहीं हो रहा। ये सब USA में या यूरोप में है, लेकिन इंडिया वो लोगों को वो नहीं लेते, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहाँ रोग रहता हो, ताकि उनको घड़ी मुड़ी वो टेस्ट कर पाए। ये प्रॉब्लम है। ऑर्फन ड्रग का ये है कि कर्नाटका यूनिवर्सिटी स्टेट है जिसमें कुछ मूवमेंट हुई है, उन्होंने ये कुछ प्लान बनाया है, लेकिन कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती है कि होना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ प्रैक्टिकल टर्म्स में कुछ नहीं हुआ। द थर्ड क्वेश्चन जो रेज हुआ फॉर रेयर डिजीज पॉलिसी, तो रेयर डिजीज पॉलिसी जब बनी थी, इट वाज मोर फॉर ट्रीटेबल डिजीजेस, कि यार जो ट्रीटमेंट हैं वो लोगों को किस तरीके से पहुंचाए जाए। जो बीमारी का इलाज ही नहीं था, उन पर ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन SCA अटैक्सिया एक्सक्लूडेड नहीं है। अगर वो लिस्ट में ना भी हो, अगर इसका इलाज निकल आए और आप लिखोगे तो आपका SCA को वो इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन जब इसका इलाज ही नहीं है, क्योंकि ये जो पॉलिसी है, ऑल्दो एक एलिमेंट है कि रिसर्च की जाए, बट द फोकस इज मोर ऑन ब्रिंगिंग ट्रीटमेंट। तो इन्होंने 3 किस्म के ट्रीटमेंट किए। एक ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई किया कि बीमारी होती है
कि उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दो, लिवर ट्रांसप्लांट कर दो और वो इलाज हो जाए। तो इसका एक टाइम खर्चा गवर्नमेंट हैज एग्रीड टू गिव अप टू 50 lakhs ताकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए। कई जेनेटिक बीमारियां जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक हो जाती हैं, किडनी ट्रांसप्लांट से ठीक हो जाती हैं। सेकंड टाइप की बीमारियां हैं जो दवाई लेने से ठीक हो जाती हैं और वो दवाइयां इतनी महंगी नहीं है लेकिन लेनी पड़ती हैं लंबी, तो वो भी गवर्नमेंट ने कहा कि हम कवर करेंगे। द थर्ड जो दवाइयां हैं जो बहुत महंगी हैं, ये जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, अभी ये जो SCA वगैरह इनका कोई इलाज निकला नहीं है, लेकिन मेरी उम्मीद है वॉचिंग के जो ट्रायल हो रहे हैं USA में ऑन फ्रीडिक एटैक्सिया, इसका शायद कुछ इलाज निकलेगा, क्योंकि इसमें आयरन मेटाबॉलिज्म एंड ऑक्सीजन रेडिकल ज्यादा होते हैं। तो देयर आर सम नई ड्राइव्स आई हैं ताकि वो ऑक्सीजन को प्रिवेंट कर सकें, एक्स्ट्रा रेडिकल को। तो आई थिंक उसमें इलाज निकलने की उम्मीद है क्योंकि वो ट्रायल चल रहे हैं। ये FCA12 जो है, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी कोई बहुत ज्यादा, ये फिजियोथेरेपी एंड ट्रेनिंग, मेकिंग द हाउस में चीजें ऐसी हों कि आप गिरिए मार, खाने में कोई गर्म चीज ना गिरे आप पे, तो ये चीजें भी करें। लेकिन कई, अभी मैं तो ट्रीटमेंट न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं तो जेनेटिसिस्ट हूँ, लेकिन मेरे लोगों से बातें होती रहती हैं और कहते हैं कि एक डीप, कोई जो न्यूरोलॉजिस्ट है डॉक्टर पॉल, वो कमेंट कर सकते हैं कि ये जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है, मेरा एक पेशेंट था USA में, उसने कहा कि मेरा डीप ब्रेन स्टिमुलेशन से मेरे को फर्क पड़ा। तो आई थिंक दे शुड टेल डॉक्टर पॉल कैन कमेंट ऑन दिस कि इन्होंने कोई डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ट्राई की या नहीं की। डॉक्टर होम्स जो है वो सजेस्ट करता है, एक मेरा पेशेंट था जो उसके पास गया इलाज कराने, तो उसने कहा कि कोएंजाइम क्यू हाई डोज में लो, तो हाई डोज से लेने से उसको फर्क पड़ा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट होने लग गए। तो ये जो डॉक्टर्स हैं ट्रीट करने वाले, वो जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं अबाउट सिम्टम कि उनका क्या करना चाहिए, दे आर बेटर एबल टू आंसर देम, बट सर्टेनली DNA टेस्ट मस्ट बी डन, द पॉलिसी विल कवर ataxias provided some treatment comes। अब ट्रीटमेंट ही नहीं है तो वो क्या कवर करे। एंड ऑर्फन ड्रग एक्ट गवर्नमेंट तो करिए हम करेंगे, बट गवर्नमेंट का जो सिस्टम है मूव्स वेरी स्लोली। लेकिन कर्नाटका में कुछ हुआ, कर्नाटका गवर्नमेंट ने कुछ बनाए हैं। इनफैक्ट सम पेशेंट जो LSD के हैं, गॉशे डिजीज एंड नीमैनपिक डिजीज, इनका कुछ का इलाज भी गवर्नमेंट फ्री कर रही है, जो खर्चा लाखों में होता है। सो आई होप दिस विल आंसर some of the questions that have been raised. Yeah. Thank you so much, Dr. Verma, for your contribution. That's very useful knowledge. Dr. Pal, there is a question for you from Mr. Rudra. What is the lifespan of SCA2 patients? I think आपने थोड़ा सा लाइट डाला था उसके ऊपर. Can you be a little bit more specific for this question? I think Dr. Gupta, Dr. Gupta, can you hear me? Yeah, thank you. Maybe after 15 minutes I have to leave. I have already told. So 6:30 I'll be here till 6:30. About the lifespan, I do not want to introduce or discuss this issue here because it depends on many factors in spinal ataxia. As I already told that it is a disease and it depends on the number of repeat lengths. The severity of the disease. And and plus also how good the patient has been taken care, prevention of falls, prevention of pneumonia, all these many other factors are there. SCA by itself does not kill a patient, okay? And lifespan, so there are many factors. Both factors hota hai, usko kitna din koi kehega ki nahi. So that is, I think, better not to discuss. But it depends. Some part definitely, as Dr. Verma has also pointed out, that the repeat lengths will determine the severity of the disease. Not the main, I cannot tell about the lifespan, but the severity of the disease. Some of the diseases like Friedreich's ataxia can have a cardiac problem, cardiac involvement. In general, in the spinal ataxias, there is no specific cardiac involvement. But I want to highlight one or two things. We are talking about spinal ataxias, the adult onset. But
the rare disease organization like we have formed with Farukh, Achal, myself, we have all looking after a rare disease consortium in India, especially catering the movement disorders. जो ATAXIA is one of the main thing. So ये क्या होता है India में, especially in southern India, there are a lot of consanguinity. मतलब 45 to 48% rate of consanguinity means parents are blood relatives, and this propagates the autosomal recessive disorders. So हम लोग बहुत cases देखता है जो बचपन में ataxia हुआ है, ataxia telangiectasia, ataxia oculomotor apraxia, many other ataxias, including Friedreich's ataxia. So after diagnosis, if you know that there is autosomal recessive, we should try to prevent the next generation from propagating that ataxia. It is preventable. शादी करना नहीं अपना रिश्तेदार के अंदर, it is better not to marry so that autosomal recessive disorders does not carry forward in the next generation. Definitely but autosomal dominant is sure, but our दूसरा टाइप का ट्रीटमेंट है हम लोग बहुत देखता है ataxia telangiectasia. ये बीमारी starts around 3rd or 4th year of life. Patient ataxic होता है, plus बहुत खांसी बीमारी होता है, large propensity to develop infections, plus इसके malignancy के भी बहुत chance होता है. So these patients can be treated, at least prevented from all those malignancy and the infections by regular screening. ये बहुत important है patients of ataxia telangiectasia को. Recently हम लोग एक trial किया है, Dr. Achal बोला था, and trial was quite successful. Probably the information will come out in a year or so about the treatment of ataxia telangiectasia. I'd be happy to take some more questions if you ask me, because in the next 10 minutes. Yeah, carry on. Yeah, if you can do that for us. Yeah. You ask me what you want to be discussed, maybe. So there's a question. I have SCA 12, so my son is bound to have SCA 12. I have SCA 12. So is my son bound to have SCA 12? No, your son is not bound to have SCA 12. These are the diseases. This is an autosomal dominant disorder. आपका जो बच्चा है, आपका बच्चे को जो एब्डोमिनल जो जीन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है? So predictive testing, if you are asymptomatic, if your son is asymptomatic, अगर son का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इंडिया में ये टेस्टिंग नहीं करते हैं. जो asymptomatic है, जो टेस्ट नहीं करता है, Dr. Farukh already had told about this, but our guidelines says that if your father or mother has some illness, we cannot do a genetic testing on you if you are not having any problems. So there's a 50% chance. If you just say there's a 50% chance your son can have, but even 100% chance is that your son may not have it. Okay. Thank you. So Mr. Rudra wants to know, how can we participate in clinical trials? So obviously, I think as you have said, आपका एक group है, आप लोग आपस में collaborate करते हैं. So there are a lot of joint projects you guys have got. उससे आप कैसे मतलब जो patients यहाँ पर हैं उनको कैसे guidance देना चाहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग trials में participate कर सकें? So it is really disappointing that India में trial hardly we get opportunity to do trials, especially in SCAs. I was called by many people earlier to do Friedreich's ataxia trial, etc. But नहीं होता है. अगर कोई trial शुरू होता है, so I am sure that the main treatment centers like in India, like All Indian Institute of Medical Sciences, PGI Chandigarh, down south, NIMHANS, Chitra Tirunal, all these 5-6 places are there. West में है, east में है. They will be the main persons, I think, doing the trial as a main institute. So you can get the information from them. Unfortunately, we do not have a forum till now about the database or disseminating the information about the trials. So I'll not be able to tell that how we can reach out to you. Though if you're in the database, definitely we can call you back from any of the centers. So are you saying that's the way forward, is to gather as much information in the communication with the patients and the communication channels between the patient community and the medical community? Definitely. So myself, Dr. Farukh, Dr. Achal, we were contemplating in the last 1 or 2 years to have a big
Society of Ataxia in India, along with the caregiver support group, we had started actually the Movement Disorder Society of India, which is a scientific society, and we are now getting a lot. There's a research wing is also there. We started in 2014. Now, myself, Achal and Farukh probably will be heading towards starting a Ataxia Society of India, where we will have a patient group also, and probably this patient group also can join with us, and so that we can have a database which will be not revealed to the public, but the doctors will have the data, and probably when any trial anyone conducts, we can reach out to you, giving a whatever way we can anonymously it can be reached out. So on the same line, आपको मालूम होगा कि बहुत ज़्यादा organizations नहीं है ataxia के लिए, तो मतलब national level पे तो यही ataxia awareness society है. International level पे आपकी क्या information है और उनका क्या role उन्होंने play किया है? तो इंटरनेशनल लेवल में देखिए नेशनल एटैक्सिया फाउंडेशन के साथ बहुत बार हम लोग कोशिश किया है इधर में ट्रायल करने का. The problem is that I am also a member of this ATAXIA Global Foundation, but there are two aspects of this research. एक होता है जो उन लोग जो बाहर से जो आता है, they are very insistent on giving blood samples to be sent out of India, which we cannot do for our health. The Ministry of Health and ICMR does not allow to send samples outside India, and we also don't see any justification of sending DNA or anything outside India because we have the capacity to do everything in India. Okay, for genetic testings. So the primary goal of these people who come to us, all these ATAXIA foundations, is to do trials, but also at the same time to take the blood samples. So there nowadays the problem is that the trial gets cut off at the DCGI level only, DCGI level only, and it doesn't come to us. Even if it come to us, there are so much of ethics regulations are there at least in our institute that hardly we have a chance to really participate in these trials, and the regulations is so strict, so it is difficult. But though we have really conducted one trial about 2 years back on the ATAXIA telangiectasia, but we do not get much support from the European or the Asian ATAXIA foundations, and I feel that we should do our ATAXIA foundation, our society, and because we have a varied type of disorders which cannot be compared with the rest of the world, and we have a different type of problems, and our social structure is different, and our needs are also different compared to the others. Dr. Muthyala, what do you think? What do you have to say about this? What the points raised by Dr. Pal? Can you please add on that? Well, I think one of the reasons why we are not having clinical trials in India, the drug companies have to come here, or our drug companies should invent some new drugs, then the trials will come. If we have drugs in our country, I'm sure that Dr. Paul and other people will jump in to do the clinical trials. We are not doing that. We are not getting the new drugs. Yeah, there is also. That's my answer. Great, thank you. Actually, the government is not encouraging to get the new drugs. They are always supporting the generic drugs. Generic drugs, do not stand for the clinical trials. Dr. Verma ji has something to say. You're muted, Dr. Verma, you're muted. Unmute, Dr. Verma. Yeah, Dr. Ishwar Verma. So Dr. Muthyala has said the right thing. यहाँ drugs ही नहीं बनाते तो ही trial होगा. Trial will be only on new drugs, new therapies. तो इंडिया में कंपनीज रिस्क नहीं लेना चाहती. यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है. वहाँ यूएसए में वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो पैसा डालते हैं कि यार अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हो जाएगा. इंडिया में वो रिस्क कोई नहीं लेना चाहता. So they don't want to do the trial. जब ड्रग ही नहीं है या नहीं जो ट्राई की जाए. हम तो वही हैं जो यूएसए कंपनीज हैं या यूरोप में कोई हैं, उनके पास कोई नई ड्रग है और वहाँ उनको मरीज नहीं मिल रहे तो वो इंडिया आते हैं.
जो उनको वहां मरीज मिल गए तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा, इंडिया से वो पेशेंट इसलिए लेते कि उनको घड़ी बुड़ी टेस्ट कैसे करें, यू हैव टू टेस्ट एवरी फ्यू मंथ्स। तो ये चक्कर है। तो ट्रायल करना इंडिया में इतना आसान नहीं है। तो ये क्योंकि वेंचर कैपिटलिज्म यहाँ नहीं है। लोगों को पैसा होना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट करे एंड टेक ए रिस्क। वहां ये है कि जो दवाई बन गई, ये ऑर्फन ड्रग कैसे बना, जो जब स्टार्ट हुई थी तो उसने कहा, डॉक्टर जो हेनरी टर्मेर था, उसको पता था कि मरीज बहुत कम है, ये कोई डायबिटीज तो की जैसी मरीज ने दवाई बीमारी नहीं है कि इतने मरीज हैं कि बहुत सारी दवाई बिक जाएगी, ये तो बहुत कम मरीज हैं, ये दवाई जो खर्चा आएगा वो कवर नहीं होगा। तो गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट, अदरवाइज कोई डेवलप ही नहीं करेगा। हमने भी एक मीटिंग में कंपनी वालों को बुलाया, उसने कहा डॉक्टर साहब हम तो कभी रिकवर ही नहीं कर सकते, जो 100,000 मरीज हैं, जो 2,000 मरीज हैं, तो उनमें कैसे खर्चा कवर होगा। तो गवर्नमेंट हैज टू कम इन एंड स्टेप विद द मनी। तो वहाँ ये है कि यहाँ जो रेयर डिजीज एक्ट है, ऑर्फन ड्रग एक्ट, इसमें गवर्नमेंट प्राइस नहीं फिक्स कर सकती, प्राइस बहुत हाई होता है। वहाँ यूएसए में इंश्योरेंस कंपनी दे देती है खर्चा अगर इलाज हो सकता है। तो ये चक्कर है, इसलिए यहाँ ट्रायल नहीं होते। प्लस अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि इंडिया में बनाओ, ये वो काफी एनकरेज कर रहे हैं कि इंडिया में ये चीजें डेवलप करें। सो आई थिंक देयर इज मोर चांस इन द कमिंग फ्यू इयर्स दैट वी विल डू समथिंग इन इंडिया। हेलो सॉरी। नमस्कार, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है। हेलो। अवेयरनेस सोसाइटी के इस शिखर सम्मेलन में जो पैनल डिस्कशन हो रहा है, मैं उसे आरंभ से सुन रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है और गर्व है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक लब्ध प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आज हमारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अचल का, प्रमोद पॉल का, डॉक्टर मुथ्याला का, डॉक्टर ईश्वर वर्मा का, और मैं कुछ संक्षिप्त टिप्पणी करूंगा और हमारे जो पेशेंट और उनके परिवार यहाँ पर आए हुए हैं उनके लिए एक संक्षेप में अभी तक की जो बातें हुई उनका एक सिनॉप्सिस जैसा रखना चाहूंगा कि अभी तक आप लोगों ने कई सवाल उठाए और कई प्रश्नों के बहुत अच्छे उत्तर भी प्राप्त हुए और कुल मिलाकर परिदृश्य यह बन रहा है कि लोग इच्छुक हैं क्लिनिकल ट्रायल में भाग लेने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं है। और डॉक्टर प्रमोद का कहना बिल्कुल सही है कि हमारे पास मरीजों की इतनी बड़ी संख्या है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमारे यहाँ काफी अच्छा हो गया है, लेकिन यदि या तो कोई भी क्लिनिकल ट्रायल होता है या तो गवर्नमेंट फंडेड हो या पब्लिक सेक्टर फंडेड हो या इंडस्ट्री के द्वारा फंडेड हो या किसी डोनर या वेंचर कैपिटलिस्ट के द्वारा फंडेड हो, वैसी कोई सूरत अगर बनती है तो मैं नहीं सोचता कि पूरे देश भर में कोने कोने में जो फैले हुए मरीज हैं उनके लिए ड्रग ट्रायल में भाग लेना इतना आसान होगा, क्योंकि जिन प्रमुख केंद्रों पर ये शुरू होगा उसके आसपास के इलाके में जाकर के क्लिनिकल ट्रायल में बार बार जाना पड़ता है परीक्षण के लिए। तो यदि आप दिल्ली या बेंगलोर या त्रिवेंद्रम या चंडीगढ़ के पास रहते हैं और वहां पर वो क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है तो आप उसके अंदर भाग ले पाएंगे। और जब इस तरह का कोई ट्रायल शुरू होता है तो उसकी सूचना निकलती है और हम लोगों के पास जो डाटाबेस है उसके अंदर से भी हम लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा ट्रायल शुरू हुआ है। अब जैसा कि कुछ देर पहले कहा था
कि अटेक्सिया कोई एक बीमारी का नाम है, नाम नहीं, अनेक प्रकार के म्यूटेशन, अनेक प्रकार के जेनेटिक वेरिएशन उसके अंदर होते हैं। और अगर क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा तो सारे प्रकार के अटेक्सिया एक साथ नहीं होगा, उनमें से किसी एक प्रकार के लिए, या तो क्रिड्रिक्स हो गया, या SCA12 हो गया, या SCA1 होगा, एक समय में एक। जैसा कि कैंसर का मैं उदाहरण देता हूँ, कैंसर के इलाज में बड़ी प्रगति हुई है, लेकिन कैंसर का कोई कॉमन इलाज नहीं है कि एक नई दवा निकली और उससे सारे प्रकार के कैंसर ठीक करना चालू कर दिए। तो अगर 1000 तरह के कैंसर है तो उनमें से 100 या 200 प्रकार के कैंसर ऐसे हैं जिनमें कुछ कुछ प्रगति हुई है, लेकिन बाकी जो 500-600 प्रकार के कैंसर उनमें कोई प्रगति नहीं हुई है। इसीलिए डायग्नोसिस बहुत जरूरी है कि आपको जो अटेक्सिया है वो कौन से प्रकार का है। मॉलिक्यूलर DNA टेस्ट होना जरूरी है, ताकि जब नया इलाज नया ट्रायल शुरू होता है तो आपको मालूम पड़े कि ये जो नया इलाज निकला है या नया ट्रायल शुरू हुआ वो जब तक कि आपके पास डायग्नोसिस नहीं है वो काम आप उसके अंदर आप भाग नहीं ले पाएंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि अटेक्सिया अवेयरनेस सोसाइटी इतना काम कर रही है। और जैसा कि डॉक्टर पाल ने कहा, अगर नेशनल अटेक्सिया सोसाइटी लोग बनाते हैं तो वो उनके पास और भी ज्यादा संसाधन होंगे, वो लोग ज्यादा ऊंचे स्तर का काम कर पाएंगे। तो जितनी संस्थाएं हो उतना अच्छा। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आज जो मरीज और घर वाले या अन्य वॉलंटियर्स यहाँ आए, कि आप लोग नेशनल अटेक्सिया फाउंडेशन ऑफ USA उनकी वेबसाइट को देखिए। उनकी कुल संख्या सदस्यों की 13,000। तो अमेरिका जिसकी आबादी हमसे लगभग चौथाई है, वहां पर 13,000 लोग सदस्य हैं। तो कल्पना करिए कि भारत की आबादी में इसका 4 गुना लोग होना चाहिए। हालांकि डॉक्टर अचल श्रीवास्तव और डाटाबेस में करीब 5,000 लोग हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में हम और लोगों को भी अपने साथ जोड़ पाएंगे। एक और छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा, कई बार मीडिया में या सुनी सुनाई बातों के आधार पर खबर आती है कि फला इलाज निकला है। कई लोग स्टेम सेल का विज्ञापन करते हैं कि हमारे IIM के लाख में इलाज कीजिए, लेकिन इस तरह के दावों के ऊपर सुनी सुनाई बात, तो सुनी सुनाई बात को विज्ञान की भाषा में एविडेंस बेस्ड नहीं माना जाता है, सबूत पर आधारित चिकित्सा नहीं माना जाता है। कई मरीज और कई परिवार अनावश्यक रूप से इसके अंदर खर्चा कर बैठते हैं। तो जब तक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के द्वारा किसी औषधि की प्रभावशीलता और उसकी सुरक्षा के बारे में पर्याप्त सबूत इकट्ठा न हो गए हैं, तब तक हमें इस तरह के सुनी सुनाई बातों के या एनेक्डोटल बातों के या मिथ्या विज्ञान के जो दावे मीडिया में कभी कभी आ जाते हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। Thank you, Dr. Puranik. So, any comments from the panelists about what Dr. Puranik has just talked about? Dr. Puranik, I'm just on the leaving, but I think thank you very much for summarizing the important, aspects of this discussion and the message. And I also want to give, my message that we will be definitely with the patients of ATAXIA in India, and we'll try our best to be with you and inform you as much as possible. And hope in the next 1 year we can make the ground or base for making this, bigger society with bigger participation. Thank you. Can I make a comment, please? Hello? Hello, can you hear me? Yes. Hello? Yes, we can. Yeah. Yeah, I think I have a message to the patient organizations. They should be much more active, because most of the time, patient organizations are silent speakers. Unless they speak up, it's difficult to hear their voice, either in the community of clinicians or in the government. They are really the pushers to make things happen. The patients are the key for everything. Without patients, there is nothing else there. So I strongly suggest that patient organizations should be much more active in promoting their own cause. That's what I want to tell to the patient organizations here.
Thank you, Dr. Muthyala. Over to our delegate. Okay, I'm going to read this question from Mr. Agarwal. I think this is addressed to Dr. Farukh. This is regarding the antenatal investigations. So he's talking about his son and daughter-in-law are planning for baby. The doctor has suggested them to opt for IVF, which for SCA and then impacted, which is obviously is very, very expensive treatment. What do you have to say about it? I am just going through the chat to understand the question. I think I got the question. My son and daughter, IVF, in which embryo will be tested out for SC and then impact. This is an expensive procedure. Yes, these are like say in one way a very good method to actually in क्या बोल सकता हूँ कि अगर सीधे शब्दों में बोला जाए कि अगर इन बीमारियों का अगर कोई इलाज नहीं है आज की डेट में, तो अगर हम क्या पता अगर इन्वेस्टमेंट अगर हम इस तरफ करें तो शायद एक आर्गुमेंट ये भी है, लोग बातचीत करते हैं कि इसको इरेडिकेट किया जा सकता है। तो ये वही तरीका है जिसमें कि ये जो आईवीएफ के माध्यम से ये एम्ब्रियो में टेस्टिंग की जाती है और ये थोड़ा भिन्न है जो कि हम प्रीनेटल टेस्टिंग की बात करते हैं। तो प्रीनेटल टेस्टिंग में प्रेगनेंसी के आई थिंक 11वें सप्ताह से 20वें सप्ताह के बीच में फीटस में टेस्टिंग होता है एंड उसके बाद में फीटस की कंडीशन कि वो म्यूटेशन उस फीटस में है या नहीं है, उसके आधार पे आगे के अप्रोच ली जाती है जिसमें कि वो डिसाइड किया जाता है कि अगर डिफेक्ट मिला तो वो टर्मिनेट किया जाता है प्रेगनेंसी, और उसको लेके बहुत सारे एथिकल और वो एक्ट के इश्यूज वगैरह रहते हैं। तो आई थिंक आईवीएफ में फिर भी एक थोड़ा सीधा समाधान लगता है। तो इसके प्रोज और कॉन्स की बात करें तो प्रोज में डेफिनेटली बहुत लाइक काफी इफेक्टिव सोल्यूशन है, और एक तरह से देखा जाए तो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल पर्पज से ये ऐसा लगता है कि ऐसा करने से शायद बीमारी इरेडिकेट हो सकता है हमारी सोसाइटी से, कि अगर आप एम्ब्रियो लेवल पे ही मतलब उसमें क्या किया जाता है कि मदर का ओवरी रिट्रीव किया जाता है और फादर की स्पर्म और उनको टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराया जाता है, और उसके बाद में जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाता है एक स्टेज के बाद में, जब वो 6-8 सेल की स्टेज में रहता है तब उस एम्ब्रियो का बायोप्सी होता है। एक तरह से बायोप्सी कहना एक वर्ड यूज किया जा सकता है। तो उस बायोप्सी के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि वो जो ग्रुप ऑफ एम्ब्रियो सेल्स है उसके अंदर वो डिफेक्ट स्क्रीन करके पता लगा सकते हैं कि वो जो ग्रुप ऑफ एम्ब्रियो में वो डिफेक्ट है कि नहीं है। अगर टेस्टिंग में आता है कि ये डिफेक्ट नहीं है तो वो एम्ब्रियो फ्रोजन स्टेट में रहता है और उनको इम्प्लांट किया जाता है। कौन की बात करें डेफिनेटली इस सब के मतलब तो टाइम लगता है और कम 1 महीने का करीब लग जाता है ये सब प्रोसेस होते होते, और कॉस्ट का फैक्टर जरूर है। और साथ में कि ये जब एम्ब्रियो के साथ इंजीनियरिंग किया जाता है तो कई बार अन्यथा उसके प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल वैसे देखा जाए तो कई सारी बीमारियों में और कई सारी आईवीएफ सेंटर्स में ये सुविधा उपलब्ध है और तरह की बीमारियों के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अटैक्सिया और इन सब के लिए अभी तक उतना चलन में नहीं है। तो आई थिंक जैसे जैसे और रिसर्च और माध्यम ये जो टेस्टिंग वगैरह की सुविधा है हर जगह पे और क्वालिटी मतलब ये सब चीजों का जो लेवल है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट बेस्ट लेवल पे होगा, तभी ताकि कॉन्फिडेंस डेवलप किया जा सकता है बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर टू डिसाइड अपॉन कि ये कौन से प्रकार का ये जो प्रीनेटल जो टेस्टिंग पॉसिबल होता है वो कौन सा रास्ता वो अपनाए। तो एक और बात बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो मेरा क्वेश्चन का जवाब था, लेकिन प्रारंभिक तौर पे आपके संस्था के माध्यम से जैसे अटैक्सिया अवेयरनेस सोसाइटी है तो एक तरह के इस प्रकार के नॉलेज के अवेयरनेस के बारे में भी मरीजों को अवगत कराया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि वो क्या उनको ये सब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के ये जो इनके जो मेथड्स है जो जिससे कि बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रीनेटल टेस्टिंग के बारे में, एम्ब्रियो ट्रांसफर और ऑल्सो दी अनुवांशिकता की जो कई बार कुछ सवाल भी ऐसे आ रहे हैं कि वो उनको पता नहीं है कि इनहेरिटेंस किस प्रकार से होगा, कि वो 50% होने में 50% होने लाइक नेक्स्ट जनरेशन में 50% होने की संभावना है
25% है या नहीं होने की संभावना है, इस प्रकार के नॉलेज के बारे में भी अवगत कराने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि शायद हमें एटलीस्ट जब तक इलाज ट्रायल नहीं है, हम इस तरफ अपनी पहल शुरू कर सकते हैं, ताकि पेशेंट को जो अवेलेबल नॉलेज, न्यू नॉलेज है, जो टूल्स उनके पास मतलब मौजूद है, उनके बारे में वो सही डिसीजन ले सके। मैं समझता हूँ कि सोसाइटी इस तरफ काम कर सकती है। थैंक यू डॉक्टर फारूक फॉर सच कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया और मुझे फीडबैक मिला है कि वो सेटिस्फाइड है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ क्वेश्चंस ऑडियंस से पहले भी आए थे इसके पहले, और वो थोड़ा लाइफस्टाइल सपोर्ट के बारे में है, मतलब बेसिकली लिविंग विद अटैक्सिया, तो जिसमें कुछ नई मोडालिटीज आई हैं। एक ने क्वेश्चन ये पूछा है कि जो लाइफस्टाइल सपोर्ट हैं, जैसे व्हील चेयर्स हैं, उसको 2 व्हीलर को अगर 4 व्हीलर में कन्वर्ट किया जाए और उससे कुछ फायदा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ द मोबिलिटी और सपोर्ट इन द डे टू डे वर्क। ऐसे कुछ एडजस्टमेंट्स आपके हिसाब से फायदा करेंगे क्या पेशेंट्स को? जी बिल्कुल। एक्चुअली अगर लॉजिकली सोचा जाए तो ये सब जो टेलर्ड या स्पेशलाइज जो ऐसे व्हीकल का मॉडिफिकेशन होता है, वो सब है कि पेशेंट का मोबिलाइजेशन मतलब वो क्या कहते हैं ना, वो पेशेंट को मोबाइल रख सके। तो जो भी जिस प्रकार की पद्धति प्रक्रिया से मतलब पेशेंट मोबाइल रह सके, वो स्टैटिक ना रह जाए, उसकी लाइफ एक तरह सिमट के ना रह जाए, उसके लिए जो भी हमें माध्यम मिलता है, वो किसी भी प्रकार से हो, किसी भी टूल से हो, किसी भी टेक्नोलॉजी से हो, तो मुझे लगता है कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए इन सब चीज़ों को, और हमें इसमें कोई ज़्यादा हैरानी नहीं महसूस करनी चाहिए। तो जो भी आपके लिए पॉसिबल है, जिससे कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सको जितना मैक्सिमम, जिस तरीके से, वो ठीक है, मैं समझता हूँ। Great, thank you. The next question is from Mr. Krishnamurthy. Yeah. So the question is basically around the dilemma of using the assisted devices, because they can improve the quality of life, but at the same time, you feel that you are dependent on them. So how do you solve that dilemma? And the question is to all the panelists, basically. So, the assisted devices which improve the motivation, they improve the quality of life, but at the same time you feel that you can't do much about it. You're not able to exercise your muscles as much. So where do you balance, how much you should make use of those? आई थिंक इसमें हमारे जो एक्सपर्ट है न्यूरोलॉजिस्ट, वो सवाल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अगर मोटो ये रखा जाए कि टू लिव विद द अटैक्सिया एंड टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम, देन आई थिंक इस फिलॉसफी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव आउटलुक के साथ, तो आई सपोज बाकी चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ये बहुत फिलोसफिकल आंसर है, मुझे पता है, मैं सही जवाब का एग्जैक्ट जो वो जानना चाह रहे हैं वो एक्सपर्ट ही दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक्सपर्ट के पास अपना सवाल रख सकते हैं डायरेक्ट विजिट में, या कभी हॉस्पिटल में उनसे क्लिनिशियन के पास जाते हैं, तब ये सवाल रख के उनसे ये मतलब पता किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो वो एक्सपर्ट की राय रहती है उसको हमें फॉलो कर लेना चाहिए। Thank you. Dr. Muthyala, what do you think about this dilemma? Well, I think as a patient, you have some responsibility of your own, how much you can make use of those assisted devices. And that's number one. Number two, your family is the most supportive asset than anybody else, no matter what anybody says. So that's another asset you have. You cannot just divide those two things and do what the best you can do. That's my suggestion, please. Thank you. Then there is a question from Mr. Kedar Latke. This is in terms of the policy matter.
So whether there should be acceptability of digital signatures in bank, which would help, the patients and the families with the different types of abilities. What do you think, and especially coming from your role in rare diseases? I don't know about too much about the electronic signatures or identification of that, because yes, now the government is more or less in every area, they are pushing towards the computerization, IT technology, something, for the benefit of everybody. If it was not there, probably we have to learn how to use it or do something about it. I don't think that to be away from such new technology is not a good idea. थैंक यू। एक कॉमन क्वेश्चन ये भी आया है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स में इन दीस टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉब्स व्हिच वुड बी रिकमेंडेड to the patients who are suffering from ataxia or are kind of in the progress stage. So vocational wise आप लोग उनको क्या advice देंगे? I have some suggestions in that one. I have been very proponent of providing some kind of employment opportunities for these ataxia or any other rare disease patients, simply because if they are not doing anything, they are becoming non-productive to the country. I'm sure that they have the ability to do something on their own. Yes, they may not be able to do as much as anybody else, other persons like you and me, but they can do it. They can contribute to the productivity. For that reason, I ask all the industries to come up with ideas, employ them in whatever they can. If suppose they can only do 1/10 of the work that is being done by normal people, only pay 1/10 of that, but that keeps occupy in the industry, and they estimate the self-esteem will go up for the patients. I think industry should try to do something about it. Thank you. Mr. Khan, ये पूछना चाहते हैं कि वो काफी समय से विटामिन ई और कोएंजाइम Q10 ले रहे हैं, almost 10 years से. What do you think is there any evidence or is there any role of these medicines in the long term management of ataxia? तो जनरली अगर हम बात करते हैं तो ये इन सब का जो रोल होता है वो सपोर्टिव होता है, इस तरह से कि वो सेलुलर हेल्थ को किसी तरह से बैलेंस कर सके. क्या होता है ना कि ये जो भी जेनेटिक डिफेक्ट है या नहीं भी जेनेटिक डिफेक्ट होता है, कई बार हमें पता नहीं होता है, तो इनमें एक जो कॉमन मैकेनिज्म टुवर्ड्स द एंड, जिस तरह से डिजीज अपना जो जेनेटिक डिफेक्ट है वो किस तरह से एक सेल को डेथ की तरफ ले जाता है, तो वो क्या होता है, जो सेलुलर डेथ होती है उसके ठीक पहले कुछ ऐसे मार्कर्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पे स्ट्रेस पड़ता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है, फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं. तो वहां पे उस समय अगर ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये जो कोलैटरल डैमेजेस होते हैं इनको कुछ हद तक शायद बैलेंस करने में हेल्प करता होगा. और कुछ ऐसे एविडेंसेस है, बहुत प्रोफाउंड एविडेंस नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वीक एविडेंस जरूर है इनका रोल टू लाइक टू स्लो टू improve the cellular health probably. So I think इसमें जो ट्रॉफिक फैक्टर्स रहते हैं, न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स बोलते हैं इनको, तो उन सब का भी रोल रहता है. और आई थिंक उसी तरह से ये विटामिन ई और जो CoQ10 के बारे में बात कर रहे हैं, इनका कुछ लिमिटेड या सम रोल डेफिनेटली टुवर्ड्स जनरल सेलुलर हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है. Thank you. Mr. Ravindra wants to ask something. Dr. Farukh, how are you? Hello, Mr. Ravindra. How are you? Nice to see you. Good. Dr. Farukh, sorry I couldn't participate in this particular discussion of the vitamin E and coenzyme Q10. Do you recommend any supplement for any improvement of cellular health? This coenzyme Q10 and vitamin E I've been seeing since my mother days, since around 20 years time. So ये ले रहे हैं. Any other drug which has come as a supplement for the improvement of cellular health?
आई थिंक मैं साइंटिस्ट हूँ, तो मेरा काम साइंस करना डेफिनेटली होता है। तो मैं सेल और चूहों और इन फिशेस के बाद जब हम डिजीज को मॉडल करते हैं, वहाँ इन सब चीजों को जरूर बेधड़क होकर सोच लेते हैं कि हम ये ट्राई कर ले, वो ट्राई कर ले। लेकिन पेशेंट के लिए आई थिंक आपके जो न्यूरोलॉजिस्ट है, आपके डॉक्टर है, जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं प्रैक्टिसिंग नहीं हूँ, तो आई वुड सजेस्ट कि आई थिंक जो न्यूरोलॉजिस्ट है आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली जो सेलुलर हेल्थ के लिए जो जनरल, जो आजकल तो अमेजोन पे भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स वगैरह रहते हैं, लेकिन मेन सवाल यह है कि उनसे कितना फायदा हो रहा है। आप एक तरफ से अपना पैसा ड्रेन करते चले जाइए और उसके बाद कुछ इफेक्ट ना भी मिले, तो उस तथ्य का भी हमें क्या कहते हैं नॉलेज रखना जरूरी है कि क्या मेरे को यही सप्लीमेंट लेना है या कोई सप्लीमेंट नहीं ले तब भी ये डिजीज का आउटकम रहेगा। तो ओवरऑल जैसे कि हम एक हेल्दी लोगों की भी बात करते हैं, राइट, हर कोई सप्लीमेंट ले रहा होता है आज की डेट में, राइट, ताकि उनकी लाइफ में वो क्या कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, स्फूर्ति बनी रहे, उनकी चाहे थोड़ा एजिंग स्लो हो जाए, या लोग ट्राई करते रहते हैं, हेल्दी लोग, हम भी ट्राई करते हैं, कोई बी कॉम्प्लेक्स लेता है, कोई किस तरह के सप्लीमेंट ले रहा है, प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहा है, तो जिसमें कि आजकल ये क्या कहते हैं ऑनलाइन माध्यम से इजीली अवेलेबल है। तो उस तरह से वो जेनेरिक हेल्थ में कुछ हेल्प जरूर करता होगा, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की बात करे जो कि वो अटैक्सिया और इससे रिलेटेड बीमारियों के लिए ही कारगर है, वैसा मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ऐसा कोई मौजूद है। लेकिन दूसरे डिजीजेस के एक्सपीरियंस से जरूर समझ आता है कि ये दे डू हेल्प टू एन एक्सटेंट, बट बहुत लिमिटेड एक्सटेंट की तरह। तो लेना और नहीं लेना ये डिसीजन शायद और एविडेंस की अगर जरूरत है भी, या मतलब हमें और रिसर्च बताएगा आगे जाके, लेकिन उनका एक लिमिटेड रोल जरूर रहता है। तो आई थिंक मैं प्रैक्टिस में तो ये देखता हूँ कि हर कोई डॉक्टर जरूर लिखता है सप्लीमेंट। मैं ये देखता हूँ कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन किसी भी तरह के न्यूरोडिजेनरेटिव पेशेंट में सप्लीमेंट्स के बिना नहीं होता है, सप्लीमेंट दिए जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक जनरल बिलीव तो है कि ये सप्लीमेंट देने से डिजीज का प्रोग्रेशन शायद स्लो हो, लेकिन किस स्तर पे होता है, किस हद तक होता है, इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी के पास भी जवाब होगा। जब तक हमारे पास कुछ नहीं है तो उस तरह से सप्लीमेंट देके, और फिजियोथेरेपी का जो रोल है वो काफी मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है। One more, my question is actually to Dr. Verma regarding the national policy for rare disease. My next question is to Dr. Verma about the national policy for rare diseases. Sir, hai? Dr. Verma, are you still there? No, he's not here, but I may try to answer your question. Okay. Acha. Dr. Muthyala. Dr. Muthyala. Sir, Dr. Verma had mentioned one thing that ataxia, though it is not mentioned in the list of rare diseases, but it is very well considered as a rare disease. But the thing is, if it is listed down, would it be better? Although it is told that if there is no treatment available, it is not to be listed in the list of rare disease. But don't you think this sort of, it should be listed, even though it doesn't have any treatment? Like maybe some assistive, the financial assistance can be in terms of buying assistive devices or any other thing, which can be supported. Even, sir, nowadays, the disability certificate which is given to ataxia patients doesn't have the mention of the term ataxia in that. It is termed as either locomotor disability or something else. As I mentioned earlier, there are more than 7,000 known diseases. It's difficult to include all the things, but make sure, I can assure you that if you want your disease to get benefited from the orphan drug, the policy matters, yes, it is done. It is there, even though your name is not there. It is eligible. Sir, even though my point is that even though the particular type of disease like ataxia or the SCA is not mentioned, it can be generally mentioned as hereditary ataxia. So if that hereditary ataxia is mentioned in the list of rare diseases, then it would be of a great help. Sure, because I agree with I you. believe, sir, that in medical terms, unless it
is written, it does not happen. I understand the dilemma as a patient organization. I do understand, and that is the struggle that we have to fight for it. As I said, even though our name is not there, yes, you are eligible for the benefits or whatever that is there, the policy dictates. On the same lines, Dr. Muthyala, what are the benefits available to the families of the patients? In that orphan drug, in that policy, there is not much written for the families. It's only they are focusing on the patient at this time. Remember, this is the first time India has ever written a policy for the rare diseases. So there is a lot to be done, lot to be included as time goes by. New therapies come, new diagnoses come. They all need to be included as it happens. As I said, that it's just the beginning. It's just the beginning. I think, as I said earlier, it is the voice of the patients that make things happen, not the industries. Sir, can I add on a little? The ATAXIA Awareness Society has written a detailed letter to the Ministry of Health and Social Justice, specifically to the address to the Union Minister, to include hereditary ataxia as a part of rare disease. Along with, we had taken Dr. Farukh's advice also, and he had done a lot of value addition in that. So that letter has gone to the Union Minister, but no reply as of now, I think, has come from there. I do understand, because I get the same frustrations that you have. I have written many letters from all the way to Prime Minister to the personal assistant. It's unfortunately in India, it's very common not to answer the letters. But my advice, as I do, keep writing it. One day you will get it, because I'm doing the same thing. I'm advising the same thing to you. Just don't give up, sir, because they didn't answer you. Sir, what do you advise? Like ATAXIA Awareness Society has written as a part of the organization to the Union Minister. You are advising to write as on the individual capacity to the. No. I don't think it hurts if you write individually, but as an organization, it has got much more weight. Yes. Sir, thirdly, I have just to thank Dr. Pal. He had mentioned about one national ATAXIA society, that group being created along with Dr. Farukh. Sir, we are ready to participate heavily in that as a part. In fact, if you can add all of us, we are ready to contribute and spread as much awareness so that your database increases. You have got a definitive database as much as possible. जी बिल्कुल हमने अभी समथिंग आप कुछ बोलना चाहते लगता है मैं बोल डॉक्टर गुप्ता यस It's okay. I think there is a connection problem. Should we move on to question by Mr. Naresh? आप कुछ पूछना चाहते? हाँ? Mr. Naresh, आप unmute किया जा रहा है? Mr. Binayak? Mr. Vijay Mehta? Please go ahead.
Mr. Mehta. Good evening, sir. Am I audible? Yes, you are. Since 3 years, I am suffering from multiple system atrophy, cerebellar, one type of ataxia only. This gives some information. Now I am suffering from breathing problem also. I was going to come, but I could not come because of my breathing problem. Here my doctor neurologist advised me not to go because of this problem, breathing problem. Dr. Farooq, what do you think? What do you want to say about this? तो मैं क्वेश्चन को पूरी तरह समझ नहीं पाया. मेरे को ये समझ आया कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनको मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी डायग्नोज हुआ है. और उसके पश्चात क्या बोला मुझे समझ नहीं आया. उन्होंने क्या कहना चाह रहे थे? ब्रीथिंग प्रॉब्लम सर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है. या अच्छा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम के लिए मुझे अब ये है कि एक बार दोबारा जांच पड़ताल करने की, क्योंकि जो मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में जो सामान्य तौर पे जो प्रॉब्लम रहती है कि एक तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम रहती है, जिसमें कि वो सब काम आते हैं जो कि आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. जैसे आपका पेशाब लगना है, आपको टेम्परेचर टॉलरेंट कितने हो या टेम्परेचर इनटॉलरेंट हो, पसीना आना, ये सब चीजें उस पर डिपेंडेंट रहती हैं. और बाकी जो दूसरी तरफ जो न्यूरोनल और डैमेज होता है वो सेरेबेलम की तरफ होता है, उनको MSC बोलते हैं. कई बार डैमेज का ज्यादा असर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की तरफ दिखा जाता है, उनको MSA पार्किंसन टाइप बोलते हैं. अब इसमें जो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है उसको एक बार थोड़ा आपको जांच पड़ताल करवाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो किस तरफ से हो रही है, कि वो क्या लंग्स की तरफ प्रॉब्लम है या हार्ट की तरफ प्रॉब्लम है, या आपकी जो थकावट है वो ज्यादा हो रही है, इस वजह से आपको ये ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं. तो आपको जो अवॉइडेबल ट्रीटेबल जो चीजें हैं उनको आपको एक बार इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए अपने डॉक्टर से बात करके. तो शायद वो समझ पाए कि अगर वो लंग्स की तरफ से हो रहा है या हार्ट की तरफ से, तो वो उसके अनुसार ट्रीटमेंट चलेगा. और अगर वो बीमारी की वजह से जनरल थकावट जो बोलते हैं उसकी वजह से हो रहा है, तो डॉक्टर ही शायद आपको जांच करके बता पाएंगे. Thank you, sir. But nowadays I am suffering from anxiety problems also. Anxiety problem. एंजाइटी के लिए वही मैं कह रहा हूँ. तो ये एक्चुअल में ना जो ब्रेथलेसनेस वाला जो मैटर बता रहे हैं ना, ये कई बार एंजाइटी से भी जुड़ा हुआ होता है. मैं बिल्कुल श्योरली नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वही होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कई बार ये ना जब हम डॉक्टर से मिलेंगे, बात करेंगे, आपकी जांच होगी, वो आपको दोबारा एग्जामिन करेंगे, तो शायद ना वो ऑब्जर्वेशन जो उनकी फाइंडिंग्स की होगी उससे आपका पता लगा पाए कि आपको ब्रेथलेसनेस की वजह क्या है. जो एंजाइटी वगैरह का है वो डेफिनेटली ट्रीटेबल होता है. तो यही मैं कहता हूँ कि ये पार्ट मैनेजेबल होता है, कि जो आपको एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, आपको स्लीपलेसनेस है, तो वो ट्रीटमेंट डेफिनेटली आपको डॉक्टर देगा. उसकी तरफ ध्यान जरूर मिलेगा, उनका ध्यान जरूर मिलेगा आपकी इस प्रॉब्लम की तरफ. तो मैं समझता हूँ कि एक बार आपको दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो न्यूरोलॉजिस्ट आपको जरूर सही राय देंगे. Thank you, sir, very much, sir. Thank you very much. जी शुक्रिया. Hello. Yeah, Mr. Vinayak, go ahead. Yes. Yes, sir. Hello. Hello, sir. हाँ बोलिए ना विनायक जी. I am suffering from tremor and ACA since 2012, but my problem is that walking problem plus writing problem plus speech therapy plus not in control at all. Total body is tremoring. I take Provanol 40, also Clonidel 0.5, and even 400 plus I have fits also from
2014. So I take a Valparin Chrono 500, and also for tremor, I take propanol 30. But last 3 or 4 months, I am totally unable to walk. My walking capacity down day by day, and also I have a secret question that I'm married and I have 2 children, but I can't diagnose this. I can know the latest technology have to prevent my children's. Can any treatment for them to prevent their future? Sir. विनायक जी, थैंक यू। मैं जितना आपका सवाल सही तरह से समझ पाया हूँ, आपके My सवाल थे। voice is not audible. My speech is stammering. So नो प्रॉब्लम, मैं समझ गया विनायक जी। जी मैं बताता हूँ। मैं जितना अपनी तरफ से, हाँ, जितना मैं अपनी तरफ से जवाब दे सकता हूँ वो मैं उतना दूंगा, और जो आपके अलग अलग प्रश्न हैं उसको आप उसी तरह के एक्सपर्ट से मतलब जरूर पूछेगा। मैं अपनी एक जनरल राय दे रहा हूँ। पहले वाले जो पार्ट में जो आप बोल रहे हैं कि अपनी सारी जो बीमारी का जो आपने स्तर बताया, उसमें एक न्यू डेवलपमेंट आपने जरूर बताया कि अभी आपको 2014 पे आपको एक फिट हुआ है और आप वैल्परिन लेना शुरू किया है, और बाकी और चीजें जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होती चली जा रही है। तो और आपने दिवाली भी बताया कि आप ट्रेमर की आप प्रोपेनोलॉल ले रहे हैं, जो एम्पेरिकली डॉक्टर सबसे पहले यही प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पार्ट को डॉक्टर्स ने ठीक से एड्रेस किया है। एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपने डॉक्टर से दोबारा मिलें, क्या पता वो कुछ और डोज अगर जिसकी गुंजाइश होगी कि अगर वो चाहे कि प्रोपेनोलॉल की डोज और ARP टेस्ट के लिए बोले हैं। ARP टेस्ट, हाँ वो वाला पार्ट आप ना अपने न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर आप उनको बताने की जरूरत है। आप वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। I have also actually I went to NIMHANS in the year 2016, and under epitally I treated muscle biopsy. That also negative, and SA1, 2, 3, and 12 also negative. My cousin brother also have same problem, so I doubt for my future. I have 2 children. तो एक्चुअली विनायक जी ऐसा है कि ये जो अभी आपने बताया कि जो टेस्ट हुआ है, पहले की एक तो बीमारी का कारण जानना जरूरी है। तो ओवरऑल जैसे कि जेनेटिक है, आप बता रहे हो कि आपके कजन को भी है, तो एक बार ये किया जा सकता है कि अपनी और जांच को दोबारा रीवैल्यूएशन, मतलब हम इसको बोलते हैं रीवैल्यूएट करना जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन से। तो आपकी जो अभी टेस्ट बताया आपने SA1, 2, 3 नेगेटिव आए हैं, तो उसके अलावा भी बहुत प्रकार के और भी बीमारियां हैं। कम से कम आज की डेट में मैं समझता हूँ कि 49 प्रकार के तो डोमिनेंट अटैक्सियास पता हो गए हैं, और करीब 30-35 रेसेसिव अटैक्सियास के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। हमारे लैब में टेस्ट भी अवेलेबल रहते हैं। तो आपको लगता है कि, मुझे लगता है कि आपको एक नेक्स्ट लेवल का टेस्ट जो बोलते हैं एक्सोम सीक्वेंसिंग वगैरह, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, डॉक्टर अचल के क्लिनिक में भी मतलब आप विजिट कर सकते हैं अगर आपके वो पास पड़ता है तो वहां से आपको जो ये जेनेटिक जांच के माध्यम से Hello. जी। Actually, I went into New Delhi AIIMS at 2015 under Achal Srivastava sir. They told me you are suffering from FRDA ataxia. अच्छा, वो आपका जांच भी वो FRDA, तो एक रेसेसिव अटैक्सिया टाइप है। और इसमें देखो ऐसा है कि आपने जो अगला सवाल, अब मैं जैसे क्योंकि आपने बता दिया है कि आपको कौन सी बीमारी है,
तो मैं इसके संदर्भ में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने सवाल पूछा है अगला कि आपके बच्चों में किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ना ये डिपेंड करेगा कि अगर जैसे आपके उसमें जो उस जीन के 2 कॉपी होते हैं फ्रीड्रिक अटैक्सिया के, वो दोनों में विकार है, दोनों में खराबी है, तो आप अपने बच्चों को दोनों में से एक कॉपी तो खराब वाली देंगे ही देंगे। लेकिन जो दूसरी कॉपी जो बच्चों में है ना, वो माँ से आती है। तो अगर माँ में अगर वो डिफेक्ट नहीं है मौजूद, तो बच्चों में एक ही विकार रहेगा, एक कॉपी डिफेक्ट रहेगा, और उस स्थिति में बच्चों में बीमारी नहीं होगी। अगर मदर से डिफेक्टिव कॉपी नहीं आता है मदर इज फाइन सर। तो वो एक ऐसा होता है कि हाँ, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि अगर मदर का अगर कैरियर स्क्रीनिंग कर दिया जाए, आपके परिवार या आपके रिश्तेदारी में शादी नहीं हो रखी है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपकी जो गोत्र है वो सेम है या आपके वो परिवार के ही सदस्य है कोई दूर के, तो उस तरह से मैं नहीं समझता कि वो कैरियर होंगे उसी बीमारी के। तो अगर पूरी तरह पुख्ता रूप से पता करना है तो कैरियर स्क्रीनिंग के लिए जा सकते हैं। तो आपकी जो वाइफ है उनका आप क्या कहते हैं कैरियर स्क्रीनिंग को फ्रीड्रिक अटैक्सिया करा सकते हैं। अगर वो बिल्कुल उनका पता चलता है कि दोनों कॉपी बिल्कुल नॉर्मल है, तो बच्चों में एक आपकी तरफ से जाएगा, वो एक खराब कॉपी ही जाएगा, और एक खराब कॉपी से बच्चों में कोई परेशानी नहीं आएगा। अगर हाँ, तो वो मैं कह रहा हूँ कि वो आपको मतलब जैसे प्रॉपर क्लिनिक में आप डॉक्टर जहाँ पे भी अपना ट्रीटमेंट चलता है, आप अपने डॉक्टर से बात करके भुवनेश्वर। हाँ, तो आपके वहाँ पे कहीं भी कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, आप उनसे बात कर सकते हैं। है। तो वो आपकी हेल्प कर देंगे आज। अच्छा सर, हेलो सर जी। Okay, which thank you, medicine Dr. which Farukh, medicine for your question. Hello? I'm going to move on to Mr. Chaitanya's question about CRISPR-9. I think probably he's trying to ask CRISPR, the future of CRISPR in India. And I think the question is addressed to you, Dr. Farukh. आप बताएंगे CRISPR का फ्यूचर इंडिया में? नहीं, वो क्रिस्पर का फ्यूचर इंडिया में नहीं, वो पूरे वर्ल्ड के लिए भी महत्व रखता है। और अभी तक जो क्रिस्पर का जो रोल है वो डेफिनेटली साइंस को समझने में, बीमारियों को पहचानने में, और बीमारी किस तरह से मतलब जेनेटिक डिफेक्ट किस तरह से वो बीमारी पैदा कर रहा है उसको समझने में जरूर हेल्प करता है। कई बार क्रिस्पर का उपयोग डायग्नोसिस के लिए भी किया जाता है। कई तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसे डेवलप हो गए हैं जिसमें क्रिस्पर पद्धति का यूज होता है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है। एक तरह से उसको डीएनए कैची बोलते हैं कि जहाँ पे भी डिफेक्ट होता है उसको कट कर दीजिए और वापस से जो जहाँ कट हो गया उसको सील कर दीजिए। तो उस तरह से मतलब थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिशेज में या मॉडल सिस्टम में जो हम लैब में काम करते हैं उसमें हम डीएनए को क्या कहते हैं ना, हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सेल के अंदर जाके ये काम किया जा सकता है। डीएनए सर्जरी एक तरह से आप इसका शब्द का उपयोग करना मतलब मैं समझता हूँ ठीक ही एक तरह से है, जो कि समझाता है इस बात को कि क्या CRISPR-9 टेक्नोलॉजी काम करता है। बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स और ये डेवलप हो रहे हैं जिसमें CRISPR के माध्यम से शायद थेरेपी डेवलप हो आने वाले टाइम में। तो इंडिया में ही नहीं, मैं समझता हूँ कि और भी जगह बाहर काफी रिसर्च हो रहा है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जो आपने क्वेश्चन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, तो यस, हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट है हमारे और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है उनको इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा रिसर्च को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, फंडिंग सपोर्ट देने की जरूरत है। तब जाके ही हम अपने यहाँ पे इन हाउस अपनी कैपेबिलिटीज और बिल्ड कर पाएंगे। कोविड के इस एक्सपीरियंस से हमने देख लिया है कि हमारे यहाँ पे क्या क्या कैपेबिलिटीज मौजूद है और हम अपने आप एक सेल्फ रिलायंट कंट्री है, आत्मनिर्भर हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा ये एक अपेक्षा रहती है कि गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान दे इस तरह से कि वो फंडिंग सपोर्ट दे, उनको अन्य प्रकार के सपोर्ट सुविधाएं भी उपलब्ध कराए। तो मैं समझता हूँ कि सारे जो रिसर्च और इलाज या कुछ भी कह सकते हो वो इंडिया में भी मतलब डेवलप किए जा सकते हैं डेफिनेटली। थैंक यू डॉक्टर फारूक। एक और क्वेश्चन है निकी भाटिया से। डॉक्टर फारूक, क्या अटैक्सिया 50% है तो क्योर हो सकता है?
उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है किस तरह का अटैक्सिया है, बट आई थिंक प्रॉब्ली यू हैव द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन देयर। मैं समझ रहा हूँ कि वो एक्चुअल में वो पूछना चाह रहे हैं कि अभी जो फुल्ली डेवलप्ड अटैक्सिया नहीं है और 50% स्टेज में है तो क्या वो क्योरेबल होता है या नहीं। तो आई थिंक ये डिपेंड करता है कि मोस्टली मतलब वो जेनेटिक है या नॉन जेनेटिक है। तो अटैक्सिया कुछ इस प्रकार के होता है जो ट्रीटेबल होता है। अभी तक एक ही प्रकार जो मैंने सुना है जो जेनेटिक अटैक्सिया ट्रीटेबल हो सकता है वो है विटामिन ई डेफिशिएंसी की जेनेटिक डिफेक्ट, जो कि विटामिन ई की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। वो डिफेक्ट अगर रहता है तो विटामिन ई के सप्लीमेंट से अटैक्सिया ठीक हो जाता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी अटैक्सिया होता है, वो अटैक्सिया भी विटामिन B12 के सप्लीमेंट से ठीक हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का कॉज है, लेकिन ज्यादातर जेनेटिक बीमारियों के लिए तो वो एक प्रोग्रेसिव बीमारियां होती है और उसके लिए कोई बहुत डेफिनेटिव क्योर तभी मौजूद नहीं है। एक नेक्स्ट फॉलो क्वेश्चन है कि आपने ये कहा था कि आपने सेल कल्चर में फॉर FRDA के लिए क्रिस्पर यूज किया था, तो आपका एक्सपीरियंस इस बारे में क्या था और आपके बेस्ट एस्टिमेट के हिसाब से ऐसा कब हो सकता है कि FRDA ह्यूमन पेशेंट्स को एक्सेप्ट करे, टेस्ट करे? बिल्कुल, एक्चुअली मैंने वही बोला कि हम अक्सर बोलते हैं कि मरीज पहले में पूछता है कि क्या हमारा इलाज पॉसिबल है कि नहीं है, ये नया ड्रग है वो हम ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। यस, हम कहते हैं कि लैब एनिमल्स जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनको हम ठीक कर देते हैं, उनका अटैक्सिया ठीक हो जाता है, लेकिन सेल का अटैक्सिया भी जो होता है वो हम ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से हमने जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो फ्रीड्रिक अटैक्सिया के लिए किया था, वो हम ये चाह रहे थे कि हमें ये देखना था कि जैसे जो फ्रीड्रिक अटैक्सिया का पेशेंट है उसका हमें न्यूरॉन चाहिए था। तो क्या होता है ना कि आप लाइव पर्सन का न्यूरॉन तो नहीं ले सकते, बायोप्सी नहीं होता है। तो हमने क्या किया था कि हमने पेशेंट के ब्लड सेल्स लिए, ब्लड सेल्स को हमने स्टेम सेल में परिवर्तित किया और जब वो एक बार स्टेम सेल बन गए तो हमारा अगला उद्देश्य था कि हम उसको न्यूरॉन बनाएंगे, तो वो पॉसिबल होता है। उसके बाद हमें देखना था कि क्या एग्जैक्टली क्या कौन सा वो रास्ता है कि जिसके द्वारा वो डिफेक्ट सेल डेथ को लीड करता है, सेल डेथ को कॉज करता है। तो हमें ये जानना था। तो हमें क्या होता है ना कि पेशेंट का सेल लाइन तो मिल गया, अब हमें जो भी उसका उस सेल के अंदर जो हो रहा है वो कितना उस डिजीज के वजह से ही हो रहा है, उसके लिए हमें कंपैरेटिव ग्रुप चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा कोई व्यक्ति लेंगे जो हेल्दी हो, जिसको फ्रीड्रिक का विकार या बीमारी नहीं है, उसका भी हम सेम तरह से सेल लाइन बने और दोनों को कंपेयर करें। तो ये क्या होता है कि ये कंपैरिजन ना फिर भी एक्यूरेट कंपैरिजन नहीं कहलाता है, क्योंकि जो वो दूसरा व्यक्ति है उसका डीएनए अलग होता है। मतलब जनरली हम कहते हैं कि दो व्यक्ति के डीएनए 99% सेम होता है, 1% होता है जो अलग होता है, लेकिन वो 1% जो डिफरेंस है ना वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो हम ये चाह रहे थे कि क्यों नहीं वो जो पेशेंट हमें फ्रीड्रिक अटैक्सिया का पेशेंट था उसी का ही हम एक कंट्रोल वर्जन बना ले। तो हमने क्या किया कि वो जो पेशेंट था जिसके अंदर फ्रीड्रिक अटैक्सिया का म्यूटेशन है उसको हमने कट कर दिया और कट होने के बाद में वो म्यूटेशन उस सेल से गायब हो गया। अब हमारे पास दो प्रकार के सेल्स हो गए, एक में जिसमें कि पेशेंट में वो डिफेक्ट है, एक सेल लाइन में डिफेक्ट है, दूसरी सेल लाइन में डिफेक्ट नहीं है, बाकी जो बचा हुआ पूरा जो मटीरियल है वो सेम है दोनों सेल लाइन में। तो एक ही पेशेंट से हमने कंट्रोल भी पैदा किया कंपेयर करने के लिए, और वो पेशेंट का लाइन जिसके अंदर डिफेक्ट है उसके अंदर हम अगले अपने एक्सपेरिमेंट करने थे, ये जानने के लिए कि फ्रीड्रिक अटैक्सिया के सेल के अंदर क्या और गतिविधियां चल रही है, क्या डिफेक्ट हो रहा है, और वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके हमें पता करना था। तो ये है कि ये टेक्निक काम करती है, ये हमने देखा है कि वो रिपीट जो होता है वो कट करके हमने हटा दिया, वो हट सकता है। लेकिन अब प्रैक्टिकली थेरेपी यूज करना है उसके लिए बहुत सारे और भी चीजें रहती है कि हमें उसको सेल के अंदर कैसे पहुंचाना है। तो वो जीन डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं, उनको हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की शायद और चीजें और रिसर्च करने की जरूरत है। लेकिन अगर रिसर्च हो रही है, मैं समझता हूँ कि शायद एक दिन पॉसिबल हो कि ह्यूमन ट्रायल क्रिस्पर पद्धति से भी शायद विकसित हो जाए। तो ये तो लगातार प्रोग्रेसिव रिसर्च के बाद ही हम कह पाएंगे। अभी तो हम सब ये इमेजिन करते हैं और सोचते हैं, उसी के इमेजिनेशन ही हमारा का, तो इसको हम बेस बना के हम अपना काम कर रहे हैं।
देखिए आगे और हमें कुछ सफलता मिलती है तो हम बताएंगे आपको जरूर। Thank you so much, Dr. Farooq. आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया है और ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. And thank you to you, Dr. Muthyala, as well. If you don't mind, because we are running out of time, if you don't mind, can we follow up these questions later and then email you if there are any specific questions? But as far as today's session is concerned, I think we would like to call it a day, and with heartfelt thanks from all of us to both of you and the previous panelists as well. It's been a really pleasure to have hosted you. जी शुक्रिया. Thank you very much. एक क्वेश्चन और है. I think sorry, Dr. Muthyala, just one question I read in the chat. So I think this is the last question. So I'll just try to answer that in short. Someone has asked that, like, can we collaborate with Dr. Azim Ansari for some molecule? So I just want to mention here that, like, we already collaborated with Dr. Azim Ansari when they discovered this molecule, and in same way we checked in cellular system that this molecule which they identified works very well to actually bring back the expression of Friedreich ataxia gene. So अब है कि उसकी जो आगे की जो ट्रायल्स की जो तरीका होता है वो फेज 1 ट्रायल होता है, पहले वो सब फेज 2 ट्रायल और वो सब, तो उनसे हम लगातार जुड़े हुए हैं. अब देखो उसमें और भी कारण रहता है कि वो हमारे साथ अब कोलैबोरेट करके ही वो अपना आगे के ट्रायल्स करेंगे, या वो चाहेंगे कि हम फेज 3 ट्रायल में जुड़े उनसे, या अभी स्टार्टिंग से वो हमें जोड़ना चाहते हैं. तो हम लगातार उनसे टच में हैं. तो होपफुली देखते हैं कि अगर वो कोलैबोरेशन वर्क करता है तो प्रॉब्ली इनिशियल स्टेज के ट्रायल शायद हमारे यहाँ के पेशेंट में भी शुरू हो पाए. यही मेरा लास्ट क्वेश्चन था. ओवर टू डॉक्टर मुथैया. थैंक यू सो मच. Dr. Farukh, thank you very much for. Dr. Muthyala, any last remarks from you, sir? Yes. I'm just responding to Dr. Farukh's suggestion. I also, as the introduction said, that I do discovery research for the ataxia. If there is anything on my side, I could collaborate or work with you, I'll be happy to do that one. But as a patient organization, I re-emphasize all patients be as a unit. If, for example, you are in Indore, I guarantee you that not many people know who exist in India. So please expand your patient circle so that you are bigger pool rather than just one particular city. That's my suggestion to the AIIMS. Dr. Swasti, which I have been working with her for the last several years. I've been telling her that include the other people in different areas. Thank you. Great. Thank you. You all are rays of hope for all our patients. So thank you once again and good night. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye.